सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? आइए आइए आइए, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव शाइन। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन बैच में। हाँ जी दोस्तों, आइए आइए आइए, वेलकम 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 वेलकम, यस यस यस। And today is our last lecture, that is on working capital management. We are going to cover this particular chapter in the most concise way. एकदम concise way में मैं आपको ये चैप्टर कवर करवाऊंगा और भाई साहब मजे आ जाएंगे इस चैप्टर को रिवाइज करने में। एक बात बोलूं, मुझे पता है आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ना ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता। मैनी ऑफ यू ऑल हेट दिस चैप्टर, बट हाँ, एक चीज़ पक्की है दैट आफ्टर टुडेज रिविजन यू विल फील योर कंफर्ट जोन इन दिस चैप्टर। ठीक है मेरे भाई, तो आ जाओ, जुड़ जाओ फटाफट से। यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाओ। और चलो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं आज के चैप्टर की। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो चैप्टर है ना, दिस चैप्टर हैज 3 पार्ट्स। वन इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ कैश। ठीक है, अब अगर ज़रूरत पड़ी तो ये चैप्टर जो है ना, इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूंगा। ठीक है, मतलब द इफ पॉसिबल, आई मीन अगर मैं कवर ना कर पाया, इफ आई एम नॉट एबल टू कवर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन ओनली 1 लेक्चर, तो 2 पार्ट्स में अपन इसको विल कवर इट इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट जो है वो अभी मॉर्निंग में फटाफट से अपलोड हो चुका होगा अगर आप ये देख रहे होंगे, एंड द नेक्स्ट पार्ट मोस्ट प्रोबेबली विल कम बाय टुनाइट। ठीक है, हाँ जी भैया, आप ये आधी हिंदी और आधी इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? एक्चुअली उसके पीछे ना रीज़न है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस। मेरे एक मतलब येस्टरडे मेरे एक एस्पिरेंट ने मुझसे कहा था कि भैया, मेनी ऑफ अस स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डाउन साउथ ऑल्सो एंड वी हैव ट्रबल्स अंडरस्टैंडिंग हिंदी। तो आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा पार्शियली हिंदी में बात करो, पार्शियली यू स्पीक इन इंग्लिश। सो क्या इंग्लिश का मिक्स हो जाएगा ना, तो हर टाइप का स्टूडेंट जो है लेक्चर को एंजॉय कर पाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है, लेट्स डू दैट, पार्शियली हिंदी पार्शियली इंग्लिश, है ना। चलो, बट डोंट वरी, टेंशन मत लेना। जितने भी हिंदी वाले हैं टेंशन मत लेना मेरे भाई, आपको बोरियत नहीं होगी इंग्लिश सुन सुन के, टेंशन मत लेना। हाँ ठीक है, चलो, तो लेट अस बिगिन। यस, आ जाओ, लेट अस बिगिन। सो आई एम स्टार्टिंग द रिविजन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लेक्चर इन 3 2 1, रेडी स्टडी पो। तो अब देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में द वेरी फर्स्ट यूनिट विच आई एम स्पीकिंग अबाउट इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर भी जो सबसे पहला कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल फॉर्मूलाज। बेसिकली ये बोलता है दैट हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू गेट द मनी आई हैव इन्वेस्टेड इन डे टू डे बिजनेस। जो अपना डे टू डे बिजनेस होता है बराबर, उसमें मैं बोलता हूँ मैंने आज कैश डाला, आई हैव इन्वेस्टेड कैश ऑन डे 1। नाउ अब वो कैश समय लेगा, द कैश विल टेक टाइम टू गेट इट सेल्फ कन्वर्टेड इनटू इन्वेंट्री, फिर इन्वेंट्री से डेटर्स, डेटर्स टू क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स के बाद आई विल गेट द कैश बैक, वापस से मेरे को कैश मिल जाएगा। हाँ भैया, तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम से मैंने कैश डाला उस पॉइंट ऑफ टाइम से साइकिल में घूम के मेरे पास कैश वापस आया। द पॉइंट ऑफ टाइम विच आई हैव इन्वेस्टेड कैश, इट फ्लोज फ्रॉम कैश टू इन्वेंट्री टू डेटर्स टू क्रेडिटर्स एंड टिल द टाइम आई गेट बैक। व्हाट, कितना टाइम हुआ, व्हाट इज द ड्यूरेशन, इसी ड्यूरेशन को अपन कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो ये देखो ओवर हियर एक बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है। फ्रॉम आई इन्वेस्टेड कैश, सो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में आया, कैश से सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, देन फ्रॉम दैट WIP, फ्रॉम दैट फिनिश गुड्स सोल्ड टू डेटर्स, डेटर से पैसा आया, आई पेड देम बैक टू माई क्रेडिटर्स, एंड द बैलेंसिंग इज व्हाट इज लेफ्ट विद मी, नन, जीरो। सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन जो मैं इन्वेस्ट करके रखूंगा वही मेरे पास आएगा, क्योंकि जस्ट इमेजिन वॉट एवर मटीरियल आई हैव परचेज, वॉट एवर कॉस्ट आई हैव इंकर्ड, right, I am going to add that in the price of the product, I am going to add my profit and I am going to sell the product to the customer। तो जो भी प्रॉफिट आया वो मेरा, जो भी कॉस्ट आया वो सब तो पे हो जाएगा। मतलब कहने से इनिशियल कैश जो मैंने इन्वेस्ट किया होगा तो सिर्फ उसके कॉस्ट के रिगार्ड, उसको सिर्फ उसके कॉस्ट के प्रपोर्शनेट में ही किया होगा मैंने। यस, so whatever cost is then it is gone, and at the end of every working capital cycle, sorry, at the end of every operating cycle I'll need new cash। ठीक है, now 5 फॉर्मूलाज है इसके, जो मुझे पता है तुम लोगों को दिक्कत होती है इसमें, मुझे पता है तुम लोगों को दिक्कत होती है इसमें, तो ये 5 फॉर्मूलाज तुम्हारे लिए एकदम बेसिक सेंस में। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। इट स्टेट्स दैट एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पर डे। अज्यूम देयर इज अ गोडाउन, एक गोडाउन है, ओवर देयर वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल आर लाइंग, एंड एवरी डे आप क्या करते हो, यू गो टू द गोडाउन, आप गोडाउन से मटेरियल उठाते हो, यू पुट इट इन द मशीन, बराबर। हर रोज गोडाउन से कुछ मटेरियल जो है वो इश्यू हो रहा है प्रोडक्शन में, बराबर है। हाँ भैया, बिल्कुल बराबर है आपकी बात। एवरी डे सम मटेरियल फ्रॉम द गोडाउन इज बीइंग इशूड टू द प्रोडक्शन।
ओके, सो व्हाट इज दैट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पर डे, वो रोज कितना माल प्रोडक्शन में इश्यू हो रहा है वो डिनोमिनेटर में जाएगा. एंड व्हाट इज द एवरेज स्टॉक of your raw material. Basically, what is the logic of this formula? How much time will it take to empty your raw material stock? अपने raw material stock को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, बेसिकली ये बोलता है raw material holding period. मतलब on an average, what is the average stock in my godown versus every day how much material is being issued out of that to production. वैसा. फिर आता है WIP holding period. अब ये समझना माल मशीन के अंदर है, the material is inside the machine and it is in process. So what is the average WIP which is inside my machine divided by out of that how many units are coming out of the machine in form of finished goods every day. So average WIP stock divided by average cost of production per day. कितना माल उसमें से प्रोड्यूस हो रहा है हर रोज, ये चीज याद रखना. ठीक है, सो रोज कितना मशीन से बाहर निकलेगा माल, या आई वुड से मटीरियल और FG. नहीं, तुम्हें ना गलत सोचते हो, इसके लिए मेरे को इधर लिखना पड़ रहा है. ठीक है, वाह वाह भैया. नेक्स्ट इज फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड. नाउ खुद सोचो, फिनिश गुड्स बन के बाहर निकल गया है, फिनिश गुड्स इज लाइंग इन द गोडाउन, नाउ यू हैव टू सेल इट टू योर डेटर. तो भाई साहब फिनिश गुड्स जो है वो गोडाउन में, तुम मुझे एक बात बताओ, अपन व्हेन डू वी बुक प्रॉफिट, मतलब जब माल गोडाउन में पड़ा है फिनिश गुड्स का, या फिर जब आई हैव सोल्ड इट टू माई डेटर. व्हेन डू आई बुक प्रॉफिट, व्हेन द इन्वेंट्री इज इन द गोडाउन और व्हेन आई हैव सोल्ड इट टू द डेटर. Of course, brother, जब आपने डेटर को माल बेच दिया, when you have sold it to the debtor, that is the time you book your profit. तो कहने से फिनिश गुड्स का जो माल है वो तो गोडाउन में कॉस्ट पे ही पड़ा रहेगा, उसमें थोड़ी ना प्रॉफिट बुक हुआ रहेगा. सो इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे. एवरेज ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स जा रहा है गोडाउन से बाहर, एंड व्हाट इज द एवरेज फिनिश स्टॉक गुड्स का स्टॉक जो आपके गोडाउन में है. तो गोडाउन से तो गुड्स कॉस्ट पे निकलेगा, वंस इट रीचेस द डेटर एट दैट टाइम आई विल बुक द प्रॉफिट. फिर आते हैं डेटर्स कलेक्शन पीरियड पे. सिंपल सी बात है, ऑन एन एवरेज आप कितना क्रेडिट सेल कर रहे हो हर दिन, एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, एंड आउट ऑफ दैट डेली सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, हाउ मेनी रिसीवेबल्स आर यू क्रिएटिंग, दैट इज डेटर्स कलेक्शन period. And what is creditors payment? Just like that, how much credit purchases you are making on an average daily basis, and through that consolidated purchases per day how many creditors you are having on an average. खत्म. और बेसिक लॉजिक इसमें यही याद रखने जैसा है मेरे भाई कि क्रेडिट सेल से डेटर क्रिएट होता है, क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर्स क्रिएट होता है. क्लियर अबाउट दैट? यस भैया, एकदम क्लियर हो चुका है. तो इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ. ठीक है, 5 फॉर्मूला. सबसे पहले रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पर डे. रोज कितना मटेरियल को प्रोडक्शन में इशू हो रहा है. WIP स्टॉक, भाई सब माल मशीन के अंदर है, सो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पर डे इन द डिनोमिनेटर, एंड कितना एवरेज स्टॉक मशीन के अंदर रहता है, सो एवरेज WIP स्टॉक. देन एवरेज फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स गोडाउन में. बट अगर फिनिश गुड्स गोडाउन से बाहर निकलेगा, इफ द फिनिश गुड्स विल गो आउट ऑफ गोडाउन, प्रॉफिट हैजंट बीन बुक्ड, सो एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि गोडाउन से तो गुड्स कॉस्ट पे बाहर निकलेगा, एंड एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. डेटर्स कलेक्शन पीरियड, एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, फ्रॉम दैट कितने डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, सो एवरेज रिसीवेबल्स. क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, एवरेज डेली क्रेडिट परचेजेस, एंड आउट ऑफ दैट वहां से आप कितने क्रेडिटर्स ऑन एन एवरेज क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, फिर रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP स्टोरेज पीरियड प्लस फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड माइनस डेटर्स कलेक्शन प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड एंड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड करके आपको आएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल. एंड जो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है वो कैसे निकलेगी, 360, 52 या 12 या 365 भी ले सकते हो, डिवाइडेड बाय कितना नेट ऑपरेटिंग साइकिल है. पता है ये फॉर्मूला क्या बोलते हैं? दिस स्टेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स कैश इज गोइंग टू फ्लो थ्रू आउट द ईयर. एक साल में कितने बार पैसा घूमने वाला है. जैसे मैंने बोला ना, ऑपरेटिंग साइकिल है ये, तो एक साल में कितनी बार ये पैसा घूमेगा, मतलब कितनी बार पैसा चाहिए. जैसे मैं बोलता हूँ ऑन एन एवरेज आई विल रिक्वायर 30 lakhs एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑपरेटिंग साइकिल, एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स पॉसिबल आर 4. सो एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल नंबर 1 आई विल इन्वेस्ट 30 lakhs, नंबर 2 30 lakhs, नंबर 3 30 lakhs, नंबर 4 30 lakhs. ऑन एन एवरेज आई विल रिक्वायर 1,20 lakh rupees टू रन माई एंटायर बिजनेस थ्रू आउट द ईयर ऑन अ डे टू डे बेसिस. समझा? यस. फिर आते हैं हम लोग भाई साहब वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेशन फॉर्मूलाज पे. अब इधर ही तुम्हारी दिक्कत जाती है ना, मैं करवा देता हूँ, टेंशन मत लो. टू रिमेंबर दिस आई हैव अ वेरी सिंपल हिंट. ऑल द फॉर्मूलाज सिंपल. You now know what is operating cycle. Firstly check what is the denominator in the operating cycle, divided by 360, 52 or 12 or 365 into operating cycle में what element you have reached. जैसे मैं बोलता हूँ raw material holding period. Now raw material holding period, now I would say for example raw material requirement.
You want to estimate the raw material requirement. तो operating cycle में what we have studied regarding the raw material, भैया we have studied raw material holding period. So operating cycle which element? Raw material holding period will come here. Next, check that in that raw material holding period what was there in the denominator. भैया average cost of material consumed per day. Don't take per day, take cost of material consumed on the overall year because you are dividing it over here by 360, 50 to 12. So check raw material consumed, which was the denominator, upon 360, 50 to 12 into raw material holding period. Sorry, not this one, this one. Into raw material holding period. Now, ऐसे ही finished goods का भी formula निकलेगा, खुद सोचो. What is going to be the finished goods? Firstly, something divided by 360, 50 to 12 into something. Now, this side वाला something was, what was that particular value in the operating cycle? So operating cycle में finished goods के regarding क्या पढ़े थे अपन भैया? finished goods storage period. So this particular term is going to be finished goods storage period. Okay, now speaking about the fraction in the finished goods storage period, क्या था denominator में? What was there in the denominator? भैया गोडाउन में तो goods cost पे है, so cost of goods sold. Yes, so it is cost of goods sold divided by 360, 50 to 12 into finished goods storage period. See this. वाओ भैया मजे आ गए, मस्त मस्त याद हो रहा है. Next comes debtor. Now next comes the debtors requirement. Same. Go over there. Go over there. क्या था भैया? वहां पर था debtors collection period. So average collection period is going to be on the side. Now speaking about the fraction. In that debtors collection period, in the denominator, we used to have average daily credit sales. But don't take daily. Take on a totality basis here. So credit sales divided by 360, 50 to 12 into my what? Debtors collection period. Over here, same cheese, but only one change. Give first priority to cost of sales. Okay, you know cost sheet? Yes, bhaiya, I know cost sheet. So just from the credit, as per cost sheet logic, if you reduce your profit from the credit sales, you will get to cost of sales. Okay, so if cost of sales is not given in any sense or you cannot calculate it, then go for credit sales or as cost of sales. Now coming to creditors requirement. Once again, वहाँ पर क्या था भैया? creditors payment period. So creditors payment period side में आ जाएगा. Multiplied by, मैंने क्या बोला था भाई कि creditors payment period में what was there in the denominator? भैया it was average daily credit purchases. But take total. So credit purchases upon 360, 12, 52 into side वाला fraction, that is creditors payment period. Done, danadan, dun डारा. चलती है क्या 9 से 12? और इसके लिए तुम इतनी टेंशन ले रहे थे, बताओ भाई? 5 मिनट में पूरा करवा दिया तुमको. 5 मिनट की चीजें हिंट से याद हो सकती है और तुम इसके लिए इतना टेंशन ले रहे थे. ओके चलो. नाउ अब एक इंपॉर्टेंट, अब दो इसमें ना इंपॉर्टेंट बातें मुझे तुमको बतानी है, तो सुनना बात. सबसे पहला आता है मेरा WIP रिक्वायरमेंट. नाउ व्हाट इज WIP रिक्वायरमेंट? समझने का ट्राई करना. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पार्शियली मेड पिज्जा. ओके, नाउ तुम मुझे बताओ, से मी दैट इन अ पार्शियली मेड पिज्जा, whether work is done only on the material, only on the ingredients, or some human effort is also there. मतलब मैं बोलता हूँ मम्मी घर पे पिज्जा बनाती है, तो क्या मम्मी के बिना एफर्ट लिए ही मटेरियल अपने आप बन जाता है, इंग्रेडिएंट्स सारे अपने आप मिक्सअप हो जाते हैं? नहीं भैया, देयर इज अ पार्शियल ह्यूमन एफर्ट, देयर इज अ पार्शियल एफर्ट ऑन द इंग्रेडिएंट्स एज वेल. तो कैन आई से देयर इज सम एफर्ट ऑन द मटेरियल, देयर इज सम एफर्ट ऑन द लेबर, मीन्स द ह्यूमन डायरेक्ट वेजेस एज वेल, and there is some effort on the other expenses also. हो सकता है ना, some expenses have been incurred while producing WIP stage. Let's say for example I would say that 50% expenses if you incur, raw material will get converted into WIP, and when you incur another 50% expenses, WIP will get converted into finished goods. So 50% expenses तो incur हुआ ना? हाँ भैया. So in the WIP from now on, don't learn the formula directly, you will need to split this. Check what is the, how much raw material has been used in WIP and how much labor has been used in WIP. Now how do you value material? Bhaiya, we know that cost of material upon 360, 52 into 12 into raw material holding period, but of the WIP criteria. Whenever you are taking out WIP, see, whenever you are taking out normal material consumed, then take the raw material holding period, all right? But whenever you are estimating the working capital requirement of raw material in case of WIP, then take the WIP holding period of raw material. डोंट वरी, क्वेश्चन विल गिव यू दैट. क्वेश्चन तुमको वो दे देगा, खत्म है बात. नेक्स्ट, लेबर एक्सपेंस एलिमेंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस अपॉन 360, 50 to 12 इंटू एक्सपेंस का या लेबर का होल्डिंग पीरियड, बट दैट टू ऑफ WIP. समझ में आती है बात? हाँ भाई. इसी के अलावा एक और चीज तुमको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज एक्सपेंसेस. अब ये जो एक्सपेंसेस है, सिंपल सी बात है, टाइम लैग. एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी. तुमको भी पता है कि अप्रैल का सैलरी मई के पहले मंथ में आता है. द सैलरी ऑफ मे मंथ comes in June 1st, so there is always a time lag over there. So can I say when it comes to April, जब अप्रैल की मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा,
तब एक महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखेगी, हाँ भैया व्हेन यू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अप्रैल देयर विल बी आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 1 मंथ. व्हाई? बिकॉज एम्प्लॉइज ने सर्विस दे दी है, द सर्विस हैज बीन गिवन बाय द एम्प्लॉइज, सो द सर्विस हैज बीन अक्रूड, सो एक्सपेंस हैज बीन अक्रूड, तो एक्सपेंस दिखेगा जरूर, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में बुक जरूर हो जाएगा, बट क्या पे हुआ है? नहीं भैया, वो अगले महीने की पहली तारीख को पे होगा, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी पेड, सो इट इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. सो व्हाट इज द टाइम लैग? लेट्स से फॉर एग्जांपल आई से दैट मार्च का सैलरी आई विल पे इट इन मे, so there is a time lag of 2 months, April and May. So similarly, how do you calculate expenses over its overall year ka divided by 360 52 12 into how much time lag is there? That's it. Now these creditors can be creditors for goods as well. This is how you take out, or creditor for expenses. This is how you take out. Clear? Yes, bhaiya. Done, 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 done. Okay. This is done. This is done. This is done. Now मेरा जो now I am going to focus you all on the cost sheet concepts. अब एक बात बोलूं, यहां तक तो हर कोई करवा लेता है, यहां तक हर कोई तुमको करवा लेगा, बट इसके आगे का बहुत कम लोग करवाते, मैंने देखा है ना. बट मैं तुमको करवाऊंगा. एक मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर. गाइस आई होप यू ऑल आर ड्रिंकिंग गुड इनफ वाटर. आई होप तुम लोग मस्त मस्त पैकी पानी पी रहे हो, क्योंकि इट्स हॉट यार, गर्मी है. चलो start. Yes. So now cost sheet concepts which are required to solve questions, and we will solve all the cost sheet questions, not all the, but I will make you solve 2 questions in the class only. 2 questions मैं क्लास में ही तुमको करवा दूंगा ताकि तुम कंसेप्चुअली एकदम क्लियर हो जाओ. एंड बाय द वे दिस बुकलेट हैज बीन लॉन्च्ड यस्टरडे ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. ये नोट्स सारे शेयर हो चुके हैं कल टेलीग्राम ग्रुप में, तो अगर नहीं ज्वाइन किया है, इफ यू वांट दीज नोट्स ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, दे हैव ऑलरेडी बीन शेयर्ड यस्टरडे नाइट. चलो, तो अब मेनी क्वेश्चंस विल टेल यू एक बेसिक कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाने का. काफी क्वेश्चन बोलेगा एक बेसिक कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाओ. सो आई विल यू प्रिपेयर सिंपल. व्हाट इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट विल कम लाइक अ टोटल कॉस्ट. नाउ इफ यू ऐड प्रॉफिट इन इट, यू विल कम टू सेल्स. Okay, this was a very basic cost structure. Now comes to the complex cost sheet adjustments which you all do not understand it very easily. So अब मेरी बात ध्यान से सुनना. देखो, पहले सिर्फ इतनी चीज पे ध्यान दो. ये this is what I want to focus, this is where I want your focus on, only on this much. ठीक है, तो कॉस्ट शीट कैसे बनता है? हाउ इज अ कॉस्ट शीट फ्रेम? यू विल से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो तुम्हारा बन जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट किया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट किया, तो तुम्हारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट बन गया. बराबर, यही चीज होती है. यस. अब लेट मी टेल यू अ न्यू कंसेप्ट which you might have learnt in costing, which you might not have learnt in costing. Okay, but here's a new concept which is required for you all to solve this question. See, जब भी रॉ मटेरियल की मैं बात करूंगा, whenever I will speak about raw material can be used either to produce WIP or to produce finished goods. Example, I would say that, let's say for example I have 2 units of raw material which I have put inside the machinery. Out of that, one material is fully produced, but the second material is currently in production. So can I say raw material will from raw material some goods can be in WIP stage, some goods can be in finished goods stage. तो भैया पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है मेरे भाई कि जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हो ना, उसमें वो मटेरियल भी आएगा जिसका आपने WIP बनाया है, और वो मटेरियल भी आएगा जिसका आपने फिनिश गुड्स बनाया है. When it comes to raw material consumed, both types of material will come. The one which has been used to produce work in process, the one which has been used to produce finished goods. That's it. Next, the same goes for direct wages. The same goes for direct expenses and factory overheads. What is the logic, bhaiya? That partially made pizza, if you know. Yes, some labor has been incurred, some expenses have been incurred, some material has been utilized. So WIP so when it comes to this gross factory cost will include the cost of materials which has been used to produce WIP, प्लस वो मटेरियल भी आ जाएगा जिसका फिनिश गुड बना है. समझ में आई बात? हाँ भैया. फिर इसमें आप क्या कर दोगे? ओपनिंग WIP का स्टॉक ऐड कर दोगे. भैया ये कैसे निकलेगा? पिछले पीरियड में से. एंड तुमको पता है क्लोजिंग WIP कैसे निकलता है? ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में मैंने बोला था ना, WIP एंड FG दोनों का एलिमेंट होता है. इसमें से WIP का एलिमेंट कितना है, वही तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा. व्हाट इज द WIP एलिमेंट विच हैज बीन इंक्लूडेड इन माई ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? दैट इज गोइंग टू बी माई क्लोजिंग WIP. और ये क्लोजिंग WIP इसी वैल्यू पे अगले साल ओपनिंग WIP बन जाएगा. समझ में आती है बात? दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट चीज, इसका मतलब कैन आई से वॉट एवर नेट फैक्ट्री कॉस्ट विल कम, कैन आई से वॉट एवर नेट फैक्ट्री कॉस्ट विल कम, दैट विल ओनली इंक्लूड फिनिश गुड्स. यस भैया, बिकॉज आउट ऑफ दिस फिनिश गुड्स एंड WIP you have already reversed the WIP effect. So over here whatever net factory cost will come, that will only be in form of
finished goods. Okay, yes भैया, okay, done 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 done. Then after that whatever expenses are being incurred, जैसे admin overheads हो गया, finished goods का scrap हो गया, other eligible expense हो गया, कहने से वो तो सिर्फ finished goods के लिए ही लगेंगे. हाँ भैया, तो ये तुम्हारा जो cost of production आएगा वो सिर्फ और सिर्फ finished goods पे ही अप्लाई करेगा. तुमको इतना ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई. दिस इज द कंसेप्ट विच यू विल नीड टू अंडरस्टैंड. और ये 2-3 क्वेश्चन में यूज हुआ है तुम्हारे मॉड्यूल के. ठीक है भैया. नेक्स्ट चीज अब याद रखना, इस पर एक क्वेश्चन अपने को करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4. अभी से बता देता हूं कि उन्होंने एडमिन एक्सपेंस को है ना फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक के बाद कुछ तो भी ऐड किया हुआ है. ठीक है, विच इज देयर मिस्टेक. मैं तुमको बताऊंगा वो क्वेश्चन, टेंशन मत लो. अब दूसरा कंसेप्ट विच आई वांट यू ऑल टू नो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. एग्जांपल लेता हूं. लेट्स से फॉर एग्जांपल इन द प्रीवियस ईयर आई हैव 1000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स एज क्लोजिंग स्टॉक इन द प्रीवियस ईयर. मतलब कहने से वो इस साल में ओपनिंग स्टॉक बन जाएंगे. यस, सो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ फिनिश गुड्स का स्टॉक मेरे पास 1000 है. प्लस इन दिस ईयर आई हैव प्रोड्यूस मोर 2000 यूनिट्स. सो व्हाट इज द गुड्स अवेलेबल फॉर मी? कैन आई से पिछले साल का जो 1000 यूनिट्स नहीं बिका है, द 1000 यूनिट्स विच आई हैव नॉट सोल्ड इन द लास्ट ईयर, दे कैन ऑल्सो बी सोल्ड दिस ईयर. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स plus whatever goods I have produced in this year, that is 2000 units, they can also be sold this year. So what is cost of goods available for sale? Whatever finished goods I have produced this year plus whatever opening stock I had of the finished goods which I have carried forwarded from the last year. So this is cost of goods available for sale. और एक चीज याद रखना कि भाई साहब फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक आप निकालोगे, whatever closing stock of finished goods you will take out, it will be on cost of goods available for sale and not on cost of goods, not on cost of production. Costing में you used to do this, that calculate cost of closing stock of finished goods on the basis of cost of cost of production. बट ओवर ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पे कैलकुलेट करना. ठीक है, और इसमें से जब तुम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तुम्हारा सीओजीएस आएगा. और भैया ओपनिंग स्टॉक वेरी वेरी सिंपल, वॉट एवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यू हैव टेकन आउट लास्ट ईयर, एट द सेम वैल्यू इंक्लूड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन द करंट ईयर. सिंपल, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर. सो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. मतलब कैन आई से कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का कंसेप्ट अप्लाइज ओनली व्हेन देयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. भैया व्हाई लाइक दैट? खुद सोचो. Cost of production, there is no opening stock of finished goods. So can I say directly from the cost of production, अगर मैं closing stock of finished goods directly if I calculate it on cost of production and I reduce it, I will come to cost of goods sold. Yes भैया, means can I say cost of goods available for sale का concept सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई करता है जब मेरे भाई closing stock का opening फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हो. समझ में आई बात? यस, वेरी गुड. सो तुम्हारा एक और क्वेश्चन है मॉड्यूल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 विच इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. सो वी विल हैव टू डू दैट एज वेल टुडे. एंड एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पर, दैट इज मेरे भाई मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. कभी ऑटो रिक्शा में गए हो? एवर बीन ऑन एन ऑटो रिक्शा? यस भैया. यू नो दे चार्ज मिनिमम फेयर, आई डोंट नो, बट इन मुंबई इट हैज करेंटली 26 रुपीज़. कुछ जगह पे 26 है, कुछ जगह पे 23 रुपये है. 23 रुपीज़ इन सम प्लेसेस, 26 रुपीज़ इन सम प्लेसेस. ठीक है, सो समझने का ट्राई करना. 26 रुपीज़ इज द बेयर मिनिमम व्हाट द ऑटो वाला इज गोइंग टू चार्ज यू. फिर चाहे तुम बैठ के तुरंत उतर जाओ, मतलब तुम ऐसे बैठ के उसको टपली मार के भी बाहर आ जाओगे ना, तो भी वो तुमसे 26 रुपया तो लेने ही वाला है. बट एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करने के बाद, आफ्टर कवरिंग अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, वो 26 रुपये के ऊपर 2 रुपया और बढ़ेगा, 2 रुपया और बढ़ेगा. मतलब कैन आई से फॉर एग्जाम्पल माई टोटल फेयर वॉज 30 रुपीज़. 30 रुपये मेरा टोटल फेयर था, बट उसमें से तो 26 रुपया ऐसे ही लगने वाला था अगर मैं बैठ के भी उतर जाता. तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट हुआ, एंड ये 26 रुपया उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट का फिक्स कंपोनेंट हुआ. एंड इसमें से बाकी के जो भी रुपए होते हैं, 4 रुपये, ये हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट. तो याद रखना, हर एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, फॉर एवरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट देयर इज सम एलिमेंट ऑफ फिक्स कंपोनेंट विच विल नॉट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन और सेल्स, एंड देयर विल बी अ वेरिएबल कंपोनेंट विच विल चेंज ड्यू टू प्रोडक्शन एंड सेल्स. ठीक है, इसी के अलावा सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम? कॉस्ट शीट लॉजिक के हिसाब से ये अप्लाई करना है. ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग गुड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस सीओपी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. एंड याद रखना, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस सीओपी ऐड कर दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा. एंड व्हाट इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में इफ आई ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, आई रिड्यूस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, आई विल कम टू नेट फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, यस. सो दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट. एकदम मतलब अपन कह सकते दिस इज अ वेरी बेसिक रिविजन ऑफ द एंटायर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन यूनिट. ठीक है, यस. इसी के अलावा आई वुड सजेस्ट दैट यू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, यू रीड दिस नोट्स वेरी थरोली. ओके, इफ यू वांट टू बी एबल टू सॉल्व वर्किंग कैपिटल क्वेश्चंस इन द एग्जाम, यू नीड टू गो थ्रू दीज नोट्स वेरी थरोली. एंड सी, ज़्यादा लंबा नहीं है, इट्स नॉट दैट लेंथी, इट्स ओनली 1 2 3 4 5 पेजेस, दैट इज व्हाट यू हैव टू रीड.
So instead of skipping this entire unit, why not just read 5 pages and you'll be able to solve the question. Yes भैया. ओके चलो, तो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस. अपने को 4 क्वेश्चन करने हैं एंड 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ. 2 नहीं, एक ही. ओनली 1 क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज होमवर्क. PYQ सितंबर 2024. बाकी के 4 क्वेश्चंस अपने को क्लास में सॉल्व करने हैं. आ जाओ. तो अभी अपन लोग क्या करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चंस को क्लास में सॉल्व करते हैं. जस्ट अ मिनट. आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ. चलो, सो लेट अस बिगिन. यस भैया. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है? तुम्हारी ICAI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालो. इलस्ट्रेशन नंबर 3 नहीं बोलूंगा मैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 निकालो. आ जाओ. टेक आउट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर ICAI मॉड्यूल. इट इज वेरी वेरी सिंपल. जो लॉजिक से मैंने तुमको याद करवाया, वॉट एवर लॉजिक आई हैव इंप्लीमेंटेड इन साइड योर हेड्स राइट नाउ, जस्ट यूज इट. वही लॉजिक को यूज करना और तुम जो है क्या कर लोगे, बस बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को फोड़ दोगे. ठीक है, आ जाओ. लेट्स सी भैया आपका लॉजिक कितना काम आता है. ठीक है, आ जाओ. सो दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल पर ये बेस्ड है. बोलते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फोरकास्टेड बाय आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022. आर लिमिटेड आपको ये बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन फोरकास्ट कर रहा है. देखो आर लिमिटेड को, तो आर लिमिटेड के लिए थोड़ी ऐसी तालियां बजा दो. मस्त टेबल टेबल फॉर्मेट में इन्होंने आपको दिया हुआ है. हाँ भैया ठीक है. चलो, तो अभी ना ए आई होप आपको दिख रहा है. आई यू बी एबल टू सी? इज इट सफिशिएंट नाउ? या चलो. सो लेट अस बिगिन नाउ. So balance as on 31st of March 2022, balance as on 31st March 2021. मतलब ध्यान रखना, this is my opening and this is my closing. This is my opening and this is my closing. Yes. So see, this is my raw material stock 65 and 45, WIP, finished goods, receivables, payables. Now annual purchases of raw material all credit. Okay, so whatever raw material I have purchased, it's over here. Annual cost of production is over here, cost of goods sold is over here, annual operating cost is over here and annual sales is over here. Okay भैया, okay भैया, okay भैया. Now आ जाओ. मैंने आपको पता है क्या बोला था, वो you may take 1 year as equal to 365 days. Now the very first thing you have to take out your net operating cycle. So let us come and solve this question. It is your practice question number 1, right? Now let us remember the formulas together. Formulas को सही तरह से याद करते हैं और फिर देखते हैं. सबसे पहला मैं बोलता हूँ रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. नाउ याद करो व्हाट इज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. गोडाउन के अंदर मटेरियल है एवरी डे. व्हाट इज द अमाउंट विच इज बीन इश्यूड टू प्रोडक्शन. मतलब कैन आई से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे या डेली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. एंड इन न्यूमरेटर क्या था, ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा रहता है. सो एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक. सो नाउ टेक आउट व्हाट इज माय एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक. सी हाउ विल एवरेज कम. भैया वेरी वेरी सिंपल. एवरेज तो क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. आपको ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, आप डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकाल सकते हो. सो इट इज 45 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 करके यहाँ पे आ जाता है मेरा कितना, 55 डिवाइडेड बाय ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है. सो हैव अ लुक एट इट. यहाँ पर COMC दिया नहीं हुआ है, बट मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है ना, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. आई हैव टोल्ड यू दैट दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू कम. COMC का फॉर्मूला, नेट फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला, COGS अभी एंड में करवाया था. सो दिस इज COMC. व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. कैन आई से इट इज 45 lakhs. What is raw material purchased? It is, can I say, 400. And what is closing? It is 65. So what is my cost of material consumed? 45 plus 400 minus 65 is going to be 380. And this is yearly basis. But you have to divide it by 365 days. So 380 divided by 365 divide equal to multiplied by 55. If I do it, I will come to 52.82 days. और 83 days. चेक कर लेना मेरा आंसर सही है कि नहीं. जस्ट चेक माई आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. जस्ट अ मिनट, आई विल क्रॉस वेरीफाई माई आंसर्स.
मेरे पास एक दूसरा कॉपी, आई हैव अनदर कॉपी ऑफ मॉड्यूल विद मी. Yeah, so 52.82 days is my correct answer. Round it up and take it to 53 days. Round up and take it to 53 days. Next is WIP storage period. Now, what is my WIP storage period? मैंने तुमको क्या बोला था? WIP storage period का फॉर्मूला क्या है? अब समझना. Now the material is inside the machine. So every day, how much WIP will get totally produced and come out of the machine in case of finished goods. तो मेरा डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? रोज कितना माल प्रोड्यूस होकर मशीन के बाहर निकलेगा. ठीक है, ये नीचे आ गया. एंड ऊपर मैंने बोला एवरेज WIP स्टॉक मेरे मशीन में कितना रहता है. सो एवरेज WIP स्टॉक कितना है? तुम बोलोगे भैया 35 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2. सो 35 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2 तुम करोगे. सो इट इज 43 डिवाइडेड बाय व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे. एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है 450. तो कहना है 450 डिवाइडेड बाय 365 डेज. तो देख लो 450 अपॉन 365 डिवाइड इक्वल टू इनटू 43. इफ आई डू 34.877 आता है. या कहना है 35 डेज. rounded up figure 35 days. Let me check. Yes, so this is 35 days. Next comes finished goods का storage period. Now what is finished goods का storage period? अब समझना लॉजिक क्या था. गोडाउन में the finished goods is lying at its cost because profit is booked only when it is sold to debtor. जब डेटर को बिकता है माल तभी अपन प्रॉफिट बुक करते हैं. गोडाउन में तो भाई साहब कॉस्ट पे ही माल पड़ा है ना, तभी कौन सा प्रॉफिट बुक होता है. तो रोज कितना माल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे गोडाउन से बाहर जाएगा और ऑन एन एवरेज फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा है. सो एवरेज FG स्टॉक. सो इट इज गोइंग टू बी फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक is 60, क्लोजिंग स्टॉक is 70. So 60 plus 70 divided by 2 is going to be 65. डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब देखो एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 525. सो 525 डिवाइडेड बाई 365 डेज. तो देखो कितना होता है 525 डिवाइडेड बाई 365 डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 65 तुम करोगे तो 45.19 डेज. या आई वुड से 45 डेज. सही आ रहा है? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो ये मेरा फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड हो गया. नेक्स्ट डेटर्स कलेक्शन पीरियड. व्हाट इज डेटर्स कलेक्शन पीरियड? ऑन एन एवरेज आप कितनी क्रेडिट सेल्स करते हो पर डे और उससे एक्यूमुलेट होके कितना आपका रिसीवेबल्स ऑन एन एवरेज क्रिएट होता है. राइट? यस भैया. तो अब देखो व्हाट इज माय रिसीवेबल्स. 112 plus 135 upon 2. 112 plus 135 upon 2. That is my average receivables. That is 123.5 divided by what is my average daily credit sales. देखो they have given you कि annual sales is 585 divided by 365 days. तो on a daily basis कितनी credit sale है वो आ जाएगी. So 585 divided by 365 divide equal to multiplied by 123.5 if I do 77 days. Correct? Yes, even this is correct. And now comes finally creditors payment period. Similarly कैसे होगा? On an average मैं कितनी क्रेडिट परचेज करता हूं और उससे ऑन एन एवरेज मेरे कितने क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, तो भाई साहब क्रेडिट परचेजेस कितना है ऑन एन सॉरी व्हाट इज माय एवरेज पेएबल्स और एवरेज क्रेडिटर्स. तो तुम बोलोगे यू आर गोइंग टू से दैट इट इज 68 ओपनिंग प्लस 71 क्लोजिंग अपॉन 2. यस, सो 68 plus 71 divided by 2 if I do it is 69.5. that is what my average creditors is divided by मेरा average daily credit sales कितना है. तो तुम सॉरी क्रेडिट सेल्स नहीं सॉरी एवरेज डेली क्रेडिट परचेसेस कितना है. तो यू वुड से दैट एनुअल परचेसेस इज 400. सो 400 डिवाइडेड बाई 365. समझा? दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. So 400 divided by 365 divide equal to multiplied by 69.5 if I do 63.41 days. Or can I say 64 days? Correct? Yes, correct. और wait a minute, ये lower rounding up है ना, उसको 63 ले लो. Take the 63 days. Okay.
So now I need to take out my net operating cycle. Now what is my net operating cycle or operating cycle? Simple. Raw material holding period plus WIP storage period, that is 53 plus 35 plus finished goods storage period, that is 45 plus debtors collection period, that is 77 minus creditors payment period, that is 63, 147 days. Oh, did you get it? समझ में आती है बात? यस भैया समझ में आ जाती है बात. So this is my net operating cycle period of 147 days. Let me check it. Yes, it is altogether a correct one. Next, what is the number of operating cycles in the year? मतलब साल में कितनी बार पैसा घूम सकता है? So simple सी बात है. Let me tell you. See, very very simple. On an average, how much expenses will I be required to finance my working capital? So can I say my daily operating expenses? मैंने बोला था working capital is nothing but the funds required for my day to day business. So what is my annual operating expenses which I will require? On an average, how many operating cycles are possible? तभी पता चलेगा ना कि हर एक operating cycle के starting में मेरे को कितना पैसा चाहिए. So what is my operating cost? See, they have given that straight away in the question, that is 325 divided by what is my number of operating cycle, what is my operating cycle, I mean what is the period of my each operating cycle. सो सॉरी, हर एक ऑपरेटिंग साइकिल में कितना पैसा चाहिए वो नहीं मिलेगा, बट कितनी बार साल में पैसा घूम सकता है वो मिलेगा. ओके, सो 325 डिवाइडेड बाय 147 इज गोइंग टू बी 2.21 टाइम्स. मीन्स वंस इन द ईयर, इन 1 ईयर, फर्स्ट टाइम ये पूरा ऑपरेटिंग साइकिल घूम के प्रॉफिट आ जाएगा. सेकेंड टाइम ऑल्सो द एंटायर प्रॉफिट, द साइकिल विल गेट कंप्लीटेड इन द सेम ईयर एंड आई विल गेट द प्रॉफिट. But till the time the third cycle gets completed, I will enter into the next year. Why? Because only 0.21 or 21% of the third operating cycle is going to be conducted, will be able to be conducted in this year. बाकी का पूरा next year में जाएगा, खत्म. So ये 2.21 times match होता है. Yes. Why have I taken 320? Just a minute, guys. Just a minute. This is wrong. I'm sorry guys, this is wrong. They haven't asked what is the minimum amount of cash balance required. They have asked the number of operating cycles. Really sorry. So number of operating cycles कैसे निकलता है? साल में कितनी बार पैसा घूम सकता है, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 days divided by every operating cycle. What? So 365 divided by 147. Sorry. So this is going to be 2.48 times. मतलब 2 times entire money will get flown. बाकी का 0.48 times इस साल में हो जाएगा और बैलेंसिंग थर्ड ऑपरेटिंग साइकिल का अगले साल में हो जाएगा. सो इट इज़ नॉट एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का अलग चीज़ है. ये अपने को वर्किंग कैपिटल निकालने में ज़रूरत पड़ेगी. तो देखो, तीसरा जो लोग पूछते हैं ना कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके लिए यूज़ होगा. आई डोंट नो व्हाट आई डिड. पता नहीं मैंने सुबह सुबह क्या किया था यार. ठीक है, चलो आ जाओ. तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे होगा अब समझना. पूरे साल में मुझे 325 लाख चाहिए. यस, डिवाइडेड बाय साल में मैं 2.48 टाइम्स पैसा घुमा सकता हूँ. तो ऑन एन एवरेज हर एक वर्किंग कैपिटल साइकिल के बिगिनिंग में हाउ मच फंड्स विल आई रिक्वायर, ऐसा. सो 325 डिवाइडेड बाय 2.48 इफ आई डू 131.04 मुझे हर एक ऑपरेटिंग साइकिल के बिगिनिंग में चाहिए. ठीक है, सो 131.04 और इट इज़ 1,31,04,839. नहीं, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ बीन डन फ्रॉम माई एंड. सो वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस. क्या होता है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर का मतलब होता है कि मेरे भाई साल में कितनी बार पैसा घूम सकता है, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं डिवाइडेड बाय हर एक ऑपरेटिंग साइकिल कितना टाइम खाता है, वो मिल जाएगा साल में कितनी बार पैसा घूम सकता है. एंड द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थ्रू वन स्ट्रोक फॉर्मूला इज साल भर में कितना पैसा चाहिए. व्हाट इज माय एनुअल ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय साल में कितनी बार पैसा घूम सकता है. क्लियर? यस भैया, डन. So with this I am done with one of my questions, that is illustration number 3. अब working capital estimation पर आता है. Practice question number 1 of your ICAI module has been done. Now ICAI module illustration number 3 पर आते हैं. आ जाओ. Let us move on to illustration number 3 of your module. Don't worry, इसमें complex cost sheet नहीं है. There is no complex cost sheet. एकदम basic सा समय है.
Just let me take it out. So ये रहा chapter 9 unit 1. Yes, come to this question, illustration number 3. दिख रहा है? illustration number 3 पर आ जाओ. ये क्वेश्चन मैं हर बार करवाता हूँ. I cover this question each and every time because it is that necessary. ठीक है, आ जाओ. Let us go. Illustration number 3. How are we going to solve it? ध्यान से. On 1st of January, the managing director of Noreen Limited wishes to know the amount of working capital that will be required during the year. ठीक है, from the following information, prepare the working capital requirements forecast. Okay. Production during the previous year was 60,000 units and it is planned that this level of activity would be maintained during the present year. Now ये देखो, this is your cost sheet information. The expected ratios of the cost to selling price are raw material 60%, direct wages 10% and overheads 10%. Now see what this is going to come. Basic cost structure वाला question है ये, no complex cost sheet. So can I say raw material का ratio is going to be, just a minute, I'll take this here. Yeah, raw material, see cost to selling price मतलब cost upon selling price. So raw material cost upon selling price is 60%. Then direct wages upon selling price is going to be 10%. Overheads to selling price is going to be 20%. So what is my total cost to selling price? 60, 70, 80, 90%. Okay. Plus if I add profit of 10%, I will, can I say, get my total selling price that is of 100%. Yes भैया, एकदम basic cost sheet question, a very basic cost sheet question, nothing to worry about much over here. Okay, so see, raw materials are expected to remain in storage for an average of 2 months. Oh, raw material holding period directly is what they have given. Each unit 2 is expected to be in process for 1 month. Wow, you know what is this? The raw material holding period hai ye, but this is for the WIP element. You know, I said that when you are forecasting WIP requirement, take the raw material component separately, expenses component separately, and take raw material holding period of the WIP component which is given. So this is over here. The raw material is being fed into the pipeline immediately and labor and overhead cost accruing evenly throughout the month. Means on an average, on the first day, no labor cost is incurred, and on the last day, total labor cost is incurred when the material gets converted into finished goods. Means, can I say on an average 50% of the cost has been incurred? Yes, bhaiya, 50% of the cost has been incurred. Okay, bhaiya, done. So make sure that in the labor and overhead cost for WIP are 50% complete. But when it comes to finished goods, they are 100% complete. Okay? Yes. Just give me a minute. I'll be back. Just give me a minute. All right. I hope now you all can hear me. Okay. So this was my raw material of the WIP holding period. Now, finished goods will stay in the warehouse awaiting dispatch to customers for approximately 3 months. Matlab, can I say this is my finished goods ka storage period? Credit allowed by creditors is 2 months. Matlab, this is my creditors payment period. And credit allowed to debtors is 3 months. Matlab, can I say this is my debtors collection period. Now see, selling price what they have given is 5 rupees per unit. So quickly fit this in our cost sheet. अपन लोग इसको क्विकली कॉस्ट शीट में फिट कर देंगे कि सेलिंग प्राइस मेरा 5 रुपया पर यूनिट है. ठीक है, मतलब देखना इसका प्रॉफिट 10% 0.5, इसका कॉस्ट 90% मतलब 4.5, रॉ मटेरियल कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस 60% है. मतलब 5 का 60% मेरा रॉ मटेरियल हो गया 3 रुपये, ये हो गया 0.5 एंड 5 का 20% इफ यू डू इट इज 1 रुपी. Done. There is a regular production and sales cycle. Wages and overheads are paid on the first of each month for the previous month. Time lag.
मतलब कहने से ये टाइम लैग हो गया फॉर द रीपेमेंट ऑफ वेजेस. क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस विल ऑल्सो गेट क्रिएटेड. यस, द कंपनी नॉर्मली कीप्स कैश इन हैंड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000. दे विल ऑलवेज गिव यू दिस फिगर. दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग बी गिविंग यू दिस figure. Now just wait 1 minute. Just a minute. Okay, yeah. Okay, also have a look at this, that the overhead cost evenly accruing throughout the month, right? So this 50%, this 50% is the cost figure. And also remember that this is also my direct expenses and direct labor component of WIP. Not to worry, direct expenses and direct labor of WIP, you can take this also. But wait a minute, don't take it like that. Labor and overhead cost accruing evenly throughout the month. How can I interpret? Yeah, okay. एक तोड़ मिला है. रुको. ये जो ओवरहेड कॉस्ट अक्रूइंग इवनली है ना, इसका मतलब ये जो डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मेरा जो होल्डिंग पीरियड है फॉर WIP, टेक दिस एज 0.5 मंथ्स. क्योंकि डे 1 पे कुछ भी नहीं था, लास्ट डे पे टोटल है, तो जो भी कॉस्ट है उसका 0.5 मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना. ओके, सो नाउ वी नीड टू प्रिपेयर अ वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट. कम, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले मैं बोलता हूँ व्हाट इज माई रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट. वेरी वेरी सिंपल. अब याद करो वहां पर मैंने फॉर्मूला क्या बताया था. वेरी वेरी सिंपल भैया. सबसे पहले तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाई समथिंग डिवाइडेड बाई 360, 52 या 12. यहाँ पर मंथ्स में दिया हुआ है, सो विल डिवाइडेड बाई 12. सो समथिंग डिवाइडेड बाई 12 इंटू समथिंग. बराबर. यस भैया, समथिंग डिवाइडेड बाई 12 इंटू समथिंग. सो व्हाट इज गोइंग टू बी दिस समथिंग. ये समथिंग भाई साहब होने क्या वाला है. वेरी वेरी सिंपल, ध्यान से सुनो. व्हाट डिड आई टेल यू. वहां पर जाओ, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड वाले, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड था वहां पे, है ना. रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट का जो एलिमेंट अपन ने ऑपरेटिंग साइकिल में पढ़ा था, सो दैट ऑपरेटिंग साइकिल के एलिमेंट में इट वाज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. सो दिस समथिंग इज गोइंग टू बी रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट ईयर. ऑपरेटिंग साइकिल के एलिमेंट, ऑपरेटिंग साइकिल में वी वेंट towards raw material holding period. What was there in the denominator? Bhaiya, cost of material consumed per day. But over here we're dividing na, so take annual cost of material consumed. Oh, so see over here, what is going to be my annual cost of material consumed? It is rupees 3 into, can I say for producing 60,000 units of finished goods, I will require 60,000 units of raw material. Yes bhaiya, so 3 into 60,000 divided by 12 months into my raw material holding period. That is going to be how much? It is going to be 2 months. Yes. So what is my raw material requirement? Do it. 60,000 into 3 divided by 12 into 2, it is going to be 30,000. Matching it up. See this, 30,000 is my raw material requirement over here. I'll match. मैं एक एक फिगर आपकी मैच करवाता जाऊंगा. ठीक है. यस भैया. चलो नेक्स्ट आते हैं अपन लोग WIP स्टोरेज पीरियड पे. व्हाट इज माय WIP स्टोरेज पीरियड. अब ध्यान से, फॉर WIP स्टोरेज पीरियड आई विल नीड टू टेक आउट सेपरेटली फॉर रॉ मटेरियल, आई विल नीड टू टेक आउट सेपरेटली फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड डायरेक्ट लेबर के लिए भी मुझे सेपरेटली निकालना पड़ेगा. यहाँ पे ओवरहेड्स है. ओके, सो रॉ मटेरियल कैसा था. वेरी वेरी सिंपल. मैंने बोला था 3 into 60,000 डिवाइडेड बाई 12. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही लेना. बट यहां पर मैंने क्या बोला था, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड बट फॉर WIP विच इज 1 month. सो ओवर हियर यू विल टेक 1 month ओनली. ओके, सो ओवर हियर व्हाट विल बी माय आंसर. सो 3 into 60,000 divided by 12 into 1, if you do, it is 15,000. Now डायरेक्ट लेबर या ओवरहेड्स. नाउ आई टोल्ड यू दैट क्योंकि यहाँ पे अक्रू हुआ है इवनली, सो 0.5 months इज माई डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस का पीरियड, होल्डिंग पीरियड इनके, बट द WIP एलिमेंट वाला. सो व्हाट इज माई डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवर ईयर. सी डायरेक्ट वेजेस इज 0.5, सो टेक 0.5 एंड कहने से ये भी पूरे 60,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगा होगा. डिवाइडेड बाई 12 months इंटू 0.5 months. So it is going to be 0.5 into 60,000 divided by 12 into 0.5, 1250. And what about direct expenses? You will say once again, what is the direct expenses wala criteria? Yeah, production overheads wala criteria. It is 1 rupee. It is overheads over here.
जस्ट अ मिनट, आई मेड अ मिस्टेक. This is my direct labor and this is my overheads. So what is the per cost of overheads? Per unit cost of overheads, it is 1 into overheads भी पूरे 60,000 यूनिट्स को बनाने के लिए लगे होंगे, डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स इंटू 0.5 मंथ्स यहाँ पर. सो इट इज 2,500. सी, सो कैसे आ जाएगा ये चीज़? टोटल इन सब का मिला करके इट इज़ 15,000 प्लस 1250 प्लस 2,500 तुम करोगे, इट इज़ 18,750. ओके, सो यही समझना था इस क्वेश्चन में, मेन पॉइंट. सो 30,000 हो गया, 18,750 हो गया. अब एकदम सिंपल हो गया क्वेश्चन. नाउ फिनिश गुड्स. नाउ व्हाट इज माय फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड? जस्ट अ मिनट. या नाउ व्हाट इज माय फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड? आप बोलोगे सिंपल सी बात है भैया, इट इज गोइंग टू बी वहाँ पर समथिंग डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स इनटू समथिंग, बराबर. हाँ जी, तो मैंने बोला कि वहाँ पर जाके देखने का, वहाँ पर फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग ऑपरेटिंग साइकिल में आपने क्या चीज़ पढ़ी थी भैया? फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड. एक्चुअली ये फिनिश गुड्स रिक्वायरमेंट है. सो इट इज फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड. और इस फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड के डिनोमिनेटर में क्या चीज़ थी? यू वुड बी सेइंग दैट इन द फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड डिनोमिनेटर देयर यूज्ड टू बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि गोडाउन में तो गुड्स कॉस्ट पे ही रहता है. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अ टोटलिटी बेसिस. ओके, ओवर ईयर वी आर गोइंग टू टेक इट एज टोटल कॉस्ट. ओके, सो वेरी वेरी सिंपल. व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? इट इज 4.5 इंटू 60,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स multiplied by my finished goods storage period, which was how much? My finished goods storage period is going to be 3 months. तो 4.5 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 अगर मैं करूँ, इट इज 67,500. मैचिंग? ये रहा तुम्हारा आंसर. फिनिश गुड्स इज 67,500. नेक्स्ट. So next comes my what? Next comes my debtors collection period. Yeah, sorry, debtors requirement. Now what is debtors requirement? मैंने क्या बोला था? Something divided by 12 months into something. अब यहाँ पर है ना टोटल कॉस्ट लेना, बिकॉज वी यूज टू गिव, मैंने क्या बोला था? टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. फर्स्ट प्रायोरिटी कॉस्ट ऑफ सेल्स को दो. तो 4.5 मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा इंटू 60,000 अपॉन 12 मंथ्स divided by 12 months multiplied by what is credit allowed to debtors, once again it is 3 months. so ये भी अपने आप 67,500 आ जाएगा. अब इसमें ना add the cash balance they will give you सामने से. so cash balance is 20,000. so this is going to be my total assets, current assets I would say. so it is 30,000 plus 18,750 plus 67,500 plus 67,500 plus 20,000. So it is going to be 203,750. Now in current liability सबसे पहले creditors requirement क्या था? Can I say it is per unit of raw material purchased, or over here I can say that purchase is equal to consumed, because there is no bifurcation of opening and closing stock given. So 3 rupees multiplied by 60,000 units I might have purchased for raw material divided by 12 months into what is my creditors payment period over here? It is going to be, can I say, 3 months. 3 into 60,000 divided by 12 into 3 if I do, it is 45,000. No, it's actually 30,000. Just a minute. Is it 3 months or is it 2 months? Just a minute. Okay, yeah, credit allowed by creditors is 2 months. So it is going to be 2 months over here. 3 महीना कहाँ लिख दिया भाई मैंने? 2 महीना आएगा ना. 3 into 60,000 divided by 12 into 2 करूँगा तो यहाँ पे 30,000 आ जाता है. दूसरी चीज़, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए भी तो क्रेडिटर्स होंगे. हाँ भैया, तो डायरेक्ट लेबर का क्या सीन होगा? अच्छा, मैं दोनों का साथ में ले लूँ. 1.5
क्योंकि दोनों के लिए है ना टाइम लैग, इफ यू सी wages and overheads for both of them the time lag is one and the same. Okay, so I'll just add both of them and take it together. So 1.5 rupees into 60,000 divided by 12 months into 1 month. So it is 7,500. Now what is my current liabilities? It is 37,500. Yes. So now what is my net working capital required? Can I say it is 203750 minus 37,500? It is 1,66,250. This was a very basic question on the working capital requirement. I hope you all got it. Okay, I hope you all got it. बहुत बढ़िया. So इसमें क्या किया? कुछ नहीं किया मेरे भाई, कुछ भी नहीं किया. Seriously. एक मिनट. I'll make you all revise it once more. Yeah. यार मतलब जो इतने भी हिंदी में सुन रहे हैं ना, सच्ची बोल रहा हूँ, ये हिंदी इंग्लिश का बैलेंस मेंटेन करना मैंने इस लेक्चर से स्टार्ट किया है ना, तो तुमको दिख रहा होगा मेरे को थोड़ा ऐसे भारी भारी जा रहा है ना. बट स्टिल फॉर माई स्टूडेंट्स आई विल ट्राई इट. फॉर माई स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डू इट, है ना. फिर मुझे हिंदी भी बोलना पड़े, इंग्लिश भी बोलना पड़े, आई विल मैनेज बोथ द लैंग्वेजेस टुगेदर फॉर माई स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली. ओके, चलो. So now I'm just going to revise you it, make you revise it once. कैसा था? Very very simple. सबसे पहले we took out raw material requirement. Now what was raw material requirement? See, whatever raw material consumed is there. That okay. Now wait. Don't remember it like this. Remember the way I told you. Go to operating cycle. What have you learned regarding raw material in operating cycle? We learned raw material holding period. So raw material holding period will come in the side. ठीक है, multiplied by now come backwards in the formula. So the side one is going to be occupied by raw materials holding period, right? Come to the back side. Now back side में क्या हो जाएगा? Very very simple. In the raw material holding period, denominator में क्या था? Cost of material consumed per day. But we are already dividing it by months over here, 12 months. So cost of material consumed on total divided by 12 months. Similarly for WIP, we learned over in operating cycle WIP storage period. So WIP storage period side में, and in the fraction what will come in WIP storage period? What was the denominator? It was cost of production. So cost of production, I would suggest divided by my total 12 months. But यहाँ पर मैंने क्या बोला था? Raw material का separately निकालना. So raw material consumed divided by 360 1252 multiplied by whatever raw material holding period is there for the WIP element. And for expenses and labor, expenses and wages or overheads, I would say total expenses divided by 360 52 या 12 multiplied by what is the expenses holding period in case of WIP. Okay, next finished goods में तो सब कुछ आ जाएगा. So finished goods is going to be finished goods storage period in the side into what was the denominator of finished good in storage. Sorry, what was the denominator in finished goods storage formula in the operating cycle? So it was cost of goods sold, because गोडाउन में तो goods cost पे पड़े रहते हैं. So cost of goods sold divided by 12. फिर बाकी debtors का तो easy था, cost of sales divided by 360 1252. cost of sales याद रखना है into my debtors collection period and creditors के लिए raw material purchase divided by 360 52 12 into my creditors payment period. I need to fasten down the AC. पसीना हो रहा है यार मेरे को. चलो ठीक है. ओके, एंड हाँ एक और चीज था, टाइम लैग. टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय 360 52 12 मल्टीप्लाइड बाय माय वॉट एवर एक्सपेंसेस देयर, वॉट एवर टाइम लैग इन एक्सपेंसेस इज देयर. दैट्स इट. एंड कैश तो ये लोग क्वेश्चन में देके रखते हैं. दिस वाज अ वेरी सिंपल फ्लो इन विच यू कैन टेक आउट द एंटायर क्वेश्चन. बस इसमें इतना ध्यान रखना था कि ये जब भी आता है ना ओवरहेड कॉस्ट इवनली अक्रूइंग, जब वेन एवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट कम्स ओवरहेड कॉस्ट इवनली अक्रूइंग, मेक श्योर यू टेक दिस एज एवरेज. ओके, now I am going to do some complex cost sheet वाला क्वेश्चन. ठीक है, अब मेरे को थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन भी करवाने हैं तुमको. सबसे पहले आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4. सो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस डू इट. Yep, let's come over here. Now this is a very good question. It is going to test up the concept which I have told you. मैंने बोला था ना कि I have told you ना that in this raw material, मैंने बोला था ना raw material consumed में WIP वाला भी आएगा, finished goods वाला भी आएगा. Then in gross factory cost WIP and FG both वाला effect will come. Then out of that whatever WIP वाला effect is that is going to get reversed. Yes.
so that this question will test your that particular concept. Also over here we are going to prepare working capital requirement on a cash cost basis. So you know what is cash cost basis? Ignore all the non-cash expenses. Like for example in this question they have given depreciation, just ignore this depreciation. Okay, yes. So let us begin with this question. Yes भैया, चलिए शुरू करते हैं. PQ Limited, a company newly commencing business in 2021-22 has the following projected profit and loss account. तो सेल्स दिया हुआ है, COGS दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हैज बीन अराइव्ड एज अंडर मटीरियल वेजेस. एंड देखो इन्होंने डिप्रिसिएशन को ऐड किया हुआ है, बट वी नीड टू प्रिपेयर अ रिवाइज कॉस्ट स्टेटमेंट वेयर वी हैव टू इग्नोर द इफेक्ट. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दे हैव कैलकुलेटेड दिस ऑन दिस. ओके, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन ओवर हियर. The figure given above relates only to finished goods. Oh, just a minute. Excuse me. The figure given above relates only to finished goods and not to work in progress. अरे भाई साहब, गलती कर दी इन्होंने कॉस्ट शीट बनाते वक्त. कॉस्ट शीट इन्होंने बनाया तो है, लेकिन एक बात बोलूं, ये जो मटेरियल यूज्ड है, कैन आई से इसमें WIP का भी इफेक्ट आना चाहिए, फिनिश गुड्स वाला भी मटेरियल होना चाहिए. बट व्हाट दे हैव टोल्ड रिलेट्स ओनली टू फिनिश गुड्स, मतलब दे हैव इग्नोर्ड दिस थिंग. ओ माय गॉश, इसका मतलब क्या हुआ? दिस कॉस्ट शीट व्हाट दे हैव प्रिपेयर्ड इज रॉन्ग. कॉस्ट शीट ही गलत बनाया है इन्होंने. तो यहाँ से डायरेक्टली अगर वर्किंग कैपिटल निकालने गए तो सारे आंसर रॉन्ग ही आने वाले. इफ यू ट्राई टू टेक आउट वर्किंग कैपिटल फिगर्स आउट ऑफ दिस कॉस्ट शीट, 100% योर सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी रॉन्ग बिकॉज द कॉस्ट शीट इटसेल्फ इज रॉन्ग. Okay, so firstly, what they have said that goods equal to 15% of the year's production in terms of physical units will be in process. Now don't get confused. This is not on the basis of cost of production. Nah, this is not on the basis of cost of production. They have said that for example, if I require 100 units of raw material, just I am telling you that if I will require 100 units of raw material, iska 15% I will be requiring 15 units of WIP. So in total, I am going to require 115 units of material, out of which 15 units will be in WIP, 100 units is going to be in the form of finished goods. Got it? ऐसा है. Requiring full materials but only 40% of the other expenses. Like I said ना कि WIP के केस में you can assume that expenses and all that 50% have been incurred. But over here they have said that materials in WIP materials 100% have been used. मतलब सी कंपेयर, वो पिज़्ज़ा वाले एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करो. इन पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल सारा का सारा 100% मटीरियल यूज हो गया है, बट एक्सपेंसेस सिर्फ 40% यूज हुआ है. द कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग मटीरियल्स इक्वल टू 2 months कंजम्पशन इन स्टॉक. ठीक है, ये तो अलग सी बात आ गई अपनी. फर्स्टली वी विल नीड टू प्रिपेयर अ रिवाइज कॉस्ट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. समझ जाओगे, इट्स नॉट नथिंग रॉकेट साइंस ओवर हियर. सो कॉस्ट शीट इज व्हाट आई नीड टू प्रिपेयर ओवर हियर. नाउ सी, like I said that raw material consumed is going to include both WIP के लिए कितना हुआ प्लस FG के लिए कितना हुआ. बट यहाँ पर इन्होंने जो दिया हुआ है ना, ये सिर्फ FG के लिए दिया हुआ है 84,000. दिस इज ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ मटीरियल which has been used to produce finished goods. But what about the material which has been used to produce WIP? Not given. Plus direct wages, if I say 62,500, this also only for the sake of finished goods they have given. But what about the wages and material? What about the wages जो मटीरियल जो WIP को बनाने के लिए यूज हुए हैं? नथिंग, नो डेटा गिवन. फिर डेप्रीसिएशन ना आई एम गोइंग टू इग्नोर. दिस इज लाइक अ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बट यहाँ पर इग्नोर करना. वाई? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस. तो मैंने बोला ना, इग्नोर ऑल द नॉन कैश एक्सपेंसेस. सो दिस इज, कैन आई से माई ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? यस. एंड इसमें से आई एम गोइंग टू रिवर्स माई क्लोजिंग WIP. ओके भैया, मतलब कैन आई से आई एम गोइंग टू गेट माई नेट फैक्ट्री कॉस्ट ओवर ईयर? यस भैया. एंड एक और चीज समझ लो, देर आर नो सच एक्सपेंसेस विच क्वालिफाई between the segment of cost of production and between the segment of net factory cost and COP. net factory cost में ऐड करने लायक कुछ और एक्सपेंस है नहीं जिससे अपने को COP मिलेगा. मतलब कहने से यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया. बट दिस इज गोइंग टू बी माई कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज मैं यहाँ पे डेप्रीसिएशन को इग्नोर कर रहा हूँ. ओके, अब इसमें से ही समझने का ट्राई करना. फर्स्टली, इट इज अ न्यूली कमेंसिंग बिजनेस.
कोई भी नया कमेंसिंग बिजनेस हो, अज्यूम करना दैट देयर इज जीरो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज ओपनिंग विद जीरो स्टॉक ऑफ WIP एंड इट इज ओपनिंग विद जीरो स्टॉक ऑफ FG। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे ओपनिंग WIP ऐड नहीं किया, लेस क्लोजिंग FG, इसको भी लेस यहां पे कर देना एंड ओपनिंग को ऐड मत करना। क्यों ओपनिंग को ऐड नहीं करेंगे? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ईयर एंड देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एक और चीज, क्या यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जैसा कोई कंसेप्ट बनेगा? वेदर देयर विल बी अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन दिस क्वेश्चन, द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो वॉट एवर आई प्रोड्यूस दिस ईयर, दैट इज द ओनली स्टॉक विच विल बी अवेलेबल फॉर मी टू सेल इन द मार्केट। सो यहाँ पे तो क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं आने वाला है, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं आने वाला है। सो दिस इज कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट दे हैव डन अ मिस्टेक ओवर हियर, सो आई विल हैव टू फॉलो इट. If this question comes in exam, you also do this. This is a mistake I am telling you. Add admin expenses over here. Okay. Now, wait a minute. Can I say this was WIP plus FG both in gross factory cost, दोनों का ही इफेक्ट था, बट यहाँ पे से WIP का रिवर्स करने के बाद अपने पास सिर्फ फिनिश गुड्स का इफेक्ट आया. यस, तो कहने से एडमिन, तो कहने से ये सारे जो खर्चे हैं ये फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग ही होंगे. हाँ भैया, ये फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग नहीं हो गए क्योंकि इसके बाद ऐड हो रहे हैं. तो एडमिन एक्सपेंस का फिगर तो सही कोट किया है क्योंकि इसमें सिर्फ फिनिश गुड्स का ही इफेक्ट आना चाहिए. सो ये 14,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ओके, सो ओवर हियर दिस इज गोइंग टू बी माय कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस इवन दिस इज फॉर फिनिश गुड्स, यस, प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस. सो दिस इज आइडियली एडमिन एक्सपेंस भी इधर आना चाहिए अगर वो नॉर्मल है तो, जनरल है तो, और अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो इट शुड बी एडेड बिफोर माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आफ्टर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, बट दे हैव डन अ मिस्टेक ओवर हियर. सो ये मेरा कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा. अब वंस अगेन सेलिंग एक्सपेंसेस भी सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स के ही आने चाहिए क्योंकि ये भी हम लोग उसके नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करते हैं. सो ये फिनिश गुड्स का सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे 13,000 ऐड हो जाएगा. सो ये मेरा कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा. आई होप पहले इतना आपको समझ में आता है. आई होप पहले इतना आपको मेरे भाई समझ में आ जाता है. इतना समझ में आया? हाँ भैया, इतना अपने को समझ में आ जाता है. नाउ कम्स द मेन पॉइंट. व्हाट दे हैव टोल्ड दैट वॉट एवर रॉ मटेरियल इज बीन यूज्ड, आउट ऑफ दैट वॉट एवर रॉ मटेरियल इज बीन यूज्ड 15% ऑफ दैट इज WIP. ओके, तो मैंने बोला था ना दैट इन टोटलिटी 115 यूज हुआ है जिसमें से 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल है एंड 15 यूनिट्स ऑफ WIP है, बट मटेरियल तो पूरा का पूरा यूज हो गया है तो इसका इंटू 100% होगा. तो इट इज 100 का 15%. सो 84,000 का 15% इफ आई डू, it is 12,600. This is the amount of material that has been used for producing WIP. And now my cost sheet, and now I have total amount of raw material consumed. Finished goods के लिए 84,000 which was already given, and WIP के लिए I calculated 12,600. So 96,600 is the actual amount of material that has been consumed, out of which 84,000 was for finished goods and 12,600 was for WIP. Now direct wages and production. Now direct wages. Now can I say that out of this also 15%, now out of this also इसका भी 15% will be used for WIP. मतलब whatever wages have been used for finished goods into 15% is going to be my wages what is used for WIP. मतलब 115 are my total wages, out of which 100 is for finished goods, but 15 is going to be for WIP. So this 100 is 62,500. So into 15% is going to be this 62,500 into 15%, 9,375. Yes, but here's the twist. Here's the twist. What they have said, 40% ही पूरा अगला एक्सपेंस लगा हुआ है. मतलब कहने से जिसका भी 40% इज गोइंग टू कम. वाई? क्योंकि जितना एक्सपेंस रॉ मटेरियल का लगा है उसका 15% WIP, जितना एक्सपीरियंस FG के लिए लगा है, whatever expenses have been charged for finished goods, out 15% of them are to be charged for WIP, but उसमें से एक्चुअली से 40% ही चार्ज हुआ है अब तक. सो ये 9375 का भी 40% करोगे, सो इट इज गोइंग टू बी 3,750. समझ में आती है बात? हाँ जी भैया, 3750. जस्ट लेट मी चेक वेदर आई एम गोइंग राइट और नॉट. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, राइट? यस, हाँ, आई एम गोइंग करेक्ट. So 62,500 plus 3,750 if I do 66,250 is my actual direct wages. तो अब निकालो 96,600 plus 66,250 अगर मैं करूँगा 1,62,850. और याद रखना इसमें से आप क्लोजिंग WIP जो है वो निकालेंगे. तो क्लोजिंग WIP कितना है? अब नीचे देखो. Okay, there is no closing WIP over here.
हो ही नहीं सकता है, होगा तो पक्का है। जस्ट अ मिनट, ओके जस्ट अ मिनट गाइस। मैंने WIP का कुछ अमाउंट दिया नहीं है क्या? ओके ओके या गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। नाउ सी सिंपल, मेरी बात ध्यान से सुनना। या आई गॉट इट। देखो क्या था, W नाउ इन ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट व्हाट आई टोल्ड यू दैट WIP और फिनिश गुड्स दोनों का एलिमेंट लगेगा, बट इसमें से जो WIP का रिवर्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा ना। तो इसमें WIP का एलिमेंट कितना था, तुमको भी पता है कि ये FG वाला एलिमेंट इन्होंने दिया हुआ था, एंड दिस वाज माय WIP का एलिमेंट। सो व्हाट वाज माय WIP का एलिमेंट, 12,600 का मटेरियल प्लस 3,750 का डायरेक्ट वेजेस, सो 16,350 इसमें से WIP का एलिमेंट है। एंड बैलेंसिंग फिगर कैसे आया भैया 16,350, सिंपली बाय एडिंग दीज टू, एंड 84,000 प्लस 62,500 इज द अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स which is included in my gross factory cost 146,500. Now what to do in this question, simply reverse this amount. So ये 16,350 यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। So फिनिश गुड्स का अमाउंट कितना बचा, 162,850 माइनस 16,350, so 146,500, यही मेरा बचता है यहाँ पे। Got it? Yes भैया, got it. And this is also my cash cost of production. Now in case, see they have directly not given what is the amount of WIP holding period. Generally question में क्या होता है, वो WIP का holding period देके आपको दे देते हैं, but over here they have not given the WIP holding period. You need to calculate what is the WIP holding period over here. Okay, I mean you need to calculate it without the WIP holding period formula, and for that you should remember this logic that gross factory cost में WIP element is also there and FG element is also there, and in closing stock of WIP whatever element of WIP is included in gross factory cost, that is going to get reversed. And see, this is why I made the bifurcation, so that you would understand more clearly. Okay, so this was my net factory cost. Now what is my closing stock of finished goods? In closing stock of finished goods they have already told that it is 10% of the goods produced not yet sold. Now is there any, इस केस में do we have any kind of opening stock of finished goods? नहीं। तो क्या cost of goods available for sale जैसा कोई concept बनेगा? There will be no concept of COGAFS because there is no opening stock of finished goods. So can I say whatever my cost of production is there, directly on that I will be applying 10%? Yes भैया। So 146,500 into 10% is 14,650. Now there is a mistake over here, I know that, but just do it. 146,500 minus 14,650 plus 14,000, if you do, it is going to be 1,45,850, and plus 13,000 if you do, my cash cost of sales is 1,58,850, and this is my correct cost sheet. This is how my correct cost sheet is going to look like. Got it? So see, मैंने बोला था ना, this logic is going to come, this cost of goods available for sale is going to come. They will again and again test you this with these logics, but if you are correct, I mean if you are prepared with these logics, तो भाई कोई टक्कर नहीं है तुम्हारा। चलो, so ये तो अपना हो गया normal. Now let us prepare a working capital statement. Very very simple it is going to be. Firstly, raw material requirement. What is going to be my raw material requirement? They have told you that company believes in keeping materials equal to 2 months consumption in stock. What was my raw material consumed over here? पर टोटलिटी बेसिस है 96,600 टोटल पे लेना. सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 96,600 विच वाज माय करेक्ट फिगर. एक मिनट, मैंने हाँ एक जीरो एक्स्ट्रा ले लिया, आई टुक 1 0 एक्स्ट्रा. सो 96,600 इंटू 2 months डिवाइडेड बाई 12 months. सिंपल सी बात है. यस, एक मिनट, नॉट लाइक, इट इज नॉट गोइंग टू कम लाइक दिस. वेट अ मिनट, इट इज 96,600 जो मेरा मटेरियल कंज्यूम था वहां पर, ठीक है, टोटलिटी बेसिस पे, इनटू वहां पर मैंने पढ़ा था रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, इट इज 2 months. सो दिस इज माय वर्किंग कैपिटल. 96,600 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 2, इट इज 16,100. मैचिंग? Just a minute. Yes, so it is matching over here. It is 16,100 only. Now let us come to next element, WIP requirement. How much it is going to be?
Now see, WIP ka WIP ka holding period they have not given you. But when you prepare cost sheet na, you will get a benefit. You are going to get the closing stock of WIP and closing stock of finished goods automatically. And you know working capital ka logic kya bolte hai? That what is the amount of closing balance to be maintained. So closing WIP you already took it out from cost sheet 16350. This will automatically come in the working capital statement. Oh, भैया this is ये तो बोनस हो गया अपने लिए. हाँ, तो देखा सही कॉस्ट शीट बनाने के फायदे. And what is my finished goods ka requirement? Whatever amount of finished goods ka closing stock I have taken in cost sheet, that is what will come. But if you prepare the cost sheet correctly, only and only then you are going to get the right figure. अगर cost sheet सही से नहीं बना है तो कुछ भी कर लो सही figure नहीं आने वाला है बॉस. तो 14,650 यहाँ पर 16,350 and 14,650. Just let me check मेरा सही जा रहा है क्या? 16,350 and 14,650. perfect. तो ये 6 को मेरे को थोड़ा ऊपर, हाँ ठीक है. नेक्स्ट डेटर्स कलेक्शन पीरियड. आ जाओ भाई, या डेटर्स रिक्वायरमेंट. मैंने क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेने का. सो व्हाट इज माय कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग इट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस. सो 158,850 divided by 12 months into what is my receivables collection period. Just a minute. Sales will be 20% for cash and rest at 2 months credit. Okay. So see, whatever 1,58,850 is there, na, this is total cost of sales. But out of that, only 80% is on credit. मतलब कहना है इसे 80% का ही जो कॉस्ट ऑफ सेल है वही उसी पे मेरे को क्रेडिटर अक्रू करना पड़ेगा. यस. सो 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 12 इंटू डेटर्स कलेक्शन पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है 2 months. सो इंटू 2 months. सो 158,500 इंटू 80% divided by 12 months into 2 months. If I do, it is 21,113. Sorry, 133. सही है क्या? 21,133. Am I right or am I wrong? So 80% divided by 12 into 2. Sorry, it is 180, not 133. It is 21,180. When I retried I also got the same on calculator. देखो 21,180. हाँ, अब इसी के अलावा ना, if you have a look at it, see, बोलते हैं all expenses will be paid 1 month in advance. मतलब कहने से prepaid expenses. ओ, and prepaid expenses क्या होता है? Current asset होता है मेरे भाई. Prepaid expenses are current asset. So even this is going to come in my current asset side. So prepaid expenses. कितने एक्सपेंसेस मैंने एडवांस में भरे? लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइक टाइम लैग इन एक्सपेंसेस वाज अ करंट लाइबिलिटी. प्रीपेड एक्सपेंसेस माय करंट एसेट. ओके, सो दिस इज द concept over here. So what expenses are going to come? Very simple. See, take my cost sheet. Can I say direct wages are going to come and admin and selling expenses are also going to come. So what was my direct wages? Can I say it is 66,250 plus, just a minute, whether I have taken it, wait a minute, yeah, correct. So 66,250 is my direct wages, plus there is this admin expenses which also I will pay it in advance, and plus selling expenses 13,000 is also what I will pay it in advance. So 93,250 are my total expenses which I will pay it in advance, divided by 12 months. Treat it the same, treat this as time lag only, but go it in but let it move in current asset side. So what is the time lag like that? They said 1 month in advance, right? So 93,250 divided by 12 into 1 is 7,771, if I am not wrong. Yes, 7,771. So 7,771 is my prepaid expense amount. See, they have told something or else also. 70% of the income tax will be paid in advance in quarterly installments. You know na, that advance tax ka there is a due date 15th of June, then 15th of
September, 15th of December and 15th of March. These are the quarterly due dates for advance tax. Yes, bhaiya. So have a look at it. What is the amount of advance? See, what is the provision for taxation over here? Here you are going to take this. It is 10,000. Okay. So out of this 10,000, you are going to pay how much? 70% advance. And can I say on if you prepare the final this particular forecast, only one quarter of that advance is going to be outstanding. So divide into 1 divided by 4. So 10,000 into 70% you are paying it advance in quarterly installments. So what is my prepaid advance tax? It is 1,750. Am I correct? Yes, I am absolutely correct. So prepaid expenses done, advance tax also done, all my raw material, WIP, finished goods is also done. Now time for another thing, whether they have given any cash. Yeah, the company wishes to keep 8,000 rupees in cash. I told ना that cash वो लोग सामने से देके ही रखेंगे. तो कैश तो हो गया 8,000. तो अब मेरा जो करंट एसेट्स है वो कितना हो गया इस केस में? तो तुम बोलोगे मेरे भाई 16,100 प्लस 16,350 प्लस 14,650 प्लस 21,180 प्लस 7,771 प्लस 1,750 प्लस 8,000. इफ आई डू इट 85,801 मेरा हो गया करंट एसेट्स. 85,801 is my current assets. Now coming to current liabilities. What do we have in current liabilities? देखो, there is going to be no creditor for expenses. देखो, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस होने ही नहीं वाला है, कोई टाइम लैग वगैरह होने ही नहीं वाला है. क्यों? क्योंकि सारे एक्सपेंसेस अपन एडवांस में ही पे करके रख रहे हैं, तो वो सारा करंट एसेट में चला गया. यस भैया. भैया नेक्स्ट, व्हाट अबाउट क्रेडिटर फॉर मटीरियल? So they have taken that sundry creditors for material will extend 1.5 months credit. Now very very important. Supplier or creditor for materials. It is going to be raw material purchased, because creditor तो purchase price पे create होता है. Creditors are going to be created on purchase price. Raw material requirement is going to be on raw material consumed basis, but creditors are going to be on the raw material purchase price divided by 12 months into what is my creditors payment period? They have taken 1.5 months. Okay, so what is my raw material purchase price? Now see, you know the formula of raw cost of goods sold. We are going to use it over here. So it is opening material plus raw material purchased minus closing stock of raw material. So देखो, cost of goods sold का formula कैसा है? We know all this. Sorry, this is not cost of goods sold, this is cost of material consumed. मैंने बोला था ना, cost of material consumed का जो formula है वो यहाँ पर आ जाएगा. I have already explained you वो 3 formula जो मैंने लास्ट में करवाए थे. COGS, what was the COGS formula, net factory cost formula, cost of material consumed वाला formula. Time to apply cost of material consumed. Now I know that as per my cost sheet, my material consumed is 99,600. Okay, so it is 99,600. Now since this is the first year, I have assumed opening material as 0. Yes bhaiya. What is my raw material purchased? I don't know. That is what I have to find. And closing stock of material is what I have already found out in my cost sheet, that is 16,000. In my working capital statement, that is 16,100. Oh, so can I say what is my raw material purchased? It is 99,600 plus 16,100. तो ये हो जाएगा मेरा 1,15,700, 1,15,700. Is it correct? Just a minute. If I am not wrong. Okay, wait. Is it 99,600 or it is 96,600? It is 96,600. Yeah, that is where I went wrong. So 96,600 is going to come over here. And it is going to be not 1,15,000. This amount also reduce it by 3,000. So it is 1,12,500. And this is the raw material purchased. Oh, got it? Yes. So now what is my creditors requirement? 1,12,700 divided by 12 into 1.5 if I do 14,087.5. Okay, so this is supplier for material. And next thing, is there any other current liability? Okay, yeah, provision for taxes also there.
can I say that 1 month's provision, just a minute, let me take this out. Just a minute, guys, just a minute. Where was that gone? Yeah. Yeah. Now have a look at it. Out of this 100 percentage, can I say 70% you have already paid it as advance tax? Means 30% you have to pay at the end of the year. See, out of 10,000 in quarterly installments you paid advance tax for of 70 percentage. Means can I say 30% is still pending? Yes, bhaiya, 30% is still going to be pending over here. So this 30% is the tax liability which I will pay while filing my return in July. Oh, whatever my due date is there, whether it is in July, September, or after the advance tax installments, I will pay 30% in July or September. So what is that? So at this point of time, this is going to be like my current liability because I have to pay it next year in July. So what is provision for tax? Simple. Out of 10,000, 70,000 I have paid it in advance tax and balance 30% I will have to pay it. So 10,000 into 30% is going to be 3,000. This is my provision for tax. So this was my current asset, and what is my current liability? Can I say my current liability is 14087.5 plus 3,000. It is 17087.5. This is my current liability. And finally, what is my working capital? A minus B. So it is going to be 85,801 minus 17,087.5, 68,713. Is it coming correct? Yes, 68,713. Or 14 if you can take, it is 0.5, so take 0.5. Now another important concept which I have to explain you with question only. 10% has to be added for unforeseen contingencies. काफी बार पता है क्या होता है वर्किंग कैपिटल में ना, अनफोर्सिन कंटिंजेंसीज के लिए, मतलब अपन बोलते हैं ना कि यार देख वैसे तो ये ऑप्टिमल बैलेंस है 68,713, बट मेरे को उसे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है. आई वॉन्ट सम मोर फंड्स जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस. सो सेफ्टी मार्जिन ऑफ 10% इज वॉट दे वॉन्ट. सो 68,713 का 10%, 68,713.5 का 10% is 6871.35. So add plus 10% for contingencies 6871.35 and you are going to get the final figure 68,713.5 plus 10% 75,584.85 should be my amount of working capital. Is it matching with my solution? Let us check. Have a look at it. 75,584. Got it? Yes. So see, there was a very good concept over here. एक बहुत अच्छा concept यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ था. बहुत बढ़िया. चलो. So अभी what I am going to do is that I am going to solve one more question and उसके बाद we are going to end this particular part. ठीक है? Yeah. Let us solve one more question in writing. Yes, bhaiya, let us solve one more question in writing and then this particular unit is going to be done and dusted. तो आ जाओ. Just a minute, guys. Yeah. So now मैं क्या कर रहा हूँ, since I do not have much time, I am just going to audit this question for you all. मतलब करते हैं, but let us do this through orally. Okay, so I'll open some other notes where I have solved this question very nicely. Just wait a minute. So firstly, practice question number 4 is what we have solved. Now have a look at it. This is practice question number 5 what I am going to apply. Wait a minute. It must be there in these notes.
Yeah. Is that it? ओके या कम आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं. अब इसमें ना तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वाला कंसेप्ट भी यूज होने वाला है. ओवर हियर योर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वाला कंसेप्ट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट यूज. सो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड सी हाउ आई हैव सॉल्व इट. जस्ट लुक एट इट वंस, ऑडिट. ओके, रेडी? Starting with this question now. MA Limited is commencing a new project for manufacturing of a plastic component. The following cost information has been ascertained for annual production of 12,000 units, which is the full capacity. Now, very, very important. See, they have given semi-variable cost over here. Semi-variable cost का concept इन्होंने टेस्ट किया हुआ है. तो याद रखना, इसका जो फिक्स कंपोनेंट है ना, हर एक केस में वो 12,000 यूनिट्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगा. वाई? क्योंकि ये तो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है. बट वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात करूँ तो वो तो प्रोडक्शन के साथ तुम्हारा चेंज होएगा ना. हाँ भैया. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑन 12K. दिस इज गोइंग टू बी ऑन 12K इंटू एनी कॉस्ट. ये ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, तो देखो व्हाट दे हैव गिवन. सबसे पहले तो मटेरियल. अब साथ साथ में ना कॉस्ट शीट बनाते ही चलते हैं. इधर आओ. सो सी व्हाट इज माई मटीरियल कंज्यूम्ड. फर्स्टली दे हैव सेड दैट इन ईयर नंबर 1 I have produced 6,000 units. मतलब can I say in year 1 I had no opening stock of material? No opening stock of material. Why? Because this is a new project. It is a new project. मतलब can I say in whenever there is a new company or there is a new project, we assume that material WIP FG on year 1 is going to be 0. Yes. So what is raw material consumed on day number 1? Can I say on the first particular point? This is, can I say, number of units produced into whatever raw material consumption cost per unit is there, that will come. So 6,000 into 40, it is going to be 2,40,000 in year 1. And what about in year 2? In year 2 we have produced 9,000 units. So 9,000 units into raw material consumed per unit is 40 rupees. So it is 3,60,000. Next comes my direct labor and direct variable expenses. Now see, these are variable expenses, so these are also going to vary through my production. So in year number 1, out of 12,000 I was able to produce only 6,000. So 6,000 into 20 rupees, it is going to come 1,20,000. And in year number 2 I produced 9,000 units. So 20 rupees into 9,000 is going to be 1,80,000. Now coming to production overheads, these are fixed. So irrespective of what I have produced, irrespective of what I have sold, what I told that कभी भी fixed unit हो या fixed खर्चा हो तो भाई साहब प्रोडक्ट कितना एक्चुअली प्रोड्यूस किया, that actually does not matter to me. What I have produced, what was my full production capacity, simple as that. So in both the years it is going to be 6 rupees into 12,000, 6 rupees into 12,000. So 72,000 in both the years. Next comes my depreciation. Now what is depreciation? See, now in this case now we are not preparing it on cash cost basis. Okay, so depreciation you can take it. In last question we prepared working capital requirements on cash cost basis. So so we did not consider depreciation, but over here they haven't said anything like that. Or have they? No, they haven't said anything like that. So what is going to be my depreciation? Very, very simple. Even depreciation is a fixed production overhead. We know that. So once again it is 10 rupees into 12,000. So 1,20,000 and 1,20,000. So what is my gross factory cost or net? What is my gross factory cost? It is 5,52,000 and 7,32,000. Now over here in year number 1 there is not going to be any WIP, but they have expressly mentioned that in any of the years there is no WIP. So can I say whatever my gross factory cost is, I do not need to make any adjustments to gross factory cost and not net factory cost. Over here my both of them will be equal. फर्दर कैन आई से कि यहाँ पर जो डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एक्सपेंसेस लगा है, जो यहाँ पे मटेरियल लगा है, जो यहाँ पे फिक्स लगा है, जो डेप्रिसिएशन लगा है, ये पूरा का पूरा सिर्फ फिक्स्ड फिनिश गुड्स का ही एलिमेंट है, क्योंकि WIP का कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं. देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. सो कैन आई से ये जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में है, ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट में है, ये सारा का सारा फिनिश गुड्स का ही एलिमेंट है. हाँ भैया. नेक्स्ट, नाउ टाइम फॉर फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस. नाउ अज्यूम दैट दीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन. इन FM का लॉजिक क्या बोलते हैं? FM का लॉजिक बोलता है कि जब भी फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस दिया जाए, और इंस्टीट्यूट नहीं बोलता है कि किस लिए यूज हुआ है, प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए, जनरल के लिए, अज्यूम करना दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन. एंड प्रोडक्शन एडमिन ओवरहेड्स कैसे ऐड होते हैं भैया? यू एडेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू गेट यू एडेड टू योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट टू गेट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एंड वंस अगेन दीज आर ऑल्सो फिक्स. सो 4 into once again irrespective of my actual production capacity, 4 into 12,000 in both the years. So 48 and 48. So as per question they are related to production. Assume that. So what is my cost of production? It is coming to 6 lakhs and 7,80,000. Now
फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक एंड फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक. नाउ कैन आई से you know what was my formula for cost of goods sold? Remember, it was opening finished goods plus whatever cost of production was there minus closing finished goods. Yes, but over here, not in year one. See, in year one there is not going to be any concept of opening finished goods. Matlab, can I say in year one my closing stock of finished goods will directly come on the basis of my cost of production? Yes, but you know, whatever closing stock of finished goods is there in year one, जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मेरे पहले साल में है वो दूसरे साल के फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. हाँ भैया, तो ईयर 2 में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. क्यों? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ईयर 2 में एग्जिस्ट करता है. तो अब देखो हाउ विल इट कम. इन ईयर 1 नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फर्स्ट ईयर है. सो कैन आई से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल? यस भैया, एंड डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकल के बाहर आ जाएगा. सी कैसे निकलेगा? ये लोग बोलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्ट है इट इज 2.25 मंथ्स ऑफ एवरेज कंजम्पशन. सो कैन आई से इट इज गोइंग टू बी 6 lakhs into 2.25 upon 12. Just a minute, it is not like that. Just wait a minute. Something is what they have twisted and turned. Okay, they have taken it on units per unit ka basis. Okay, they have taken it on per unit basis. Okay, so wait a minute. See how they have taken it. Let me sorry, this was stock of actually materials. This was stock of materials. I have taken it by mistakenly as stock of finished goods. Yeah. Now see, I have produced 6,000 units in year 1, but out of which I was able to sell only 5,000 units. So can I say, see. In first year I produced 6,000 units, but actually sold units are 5,000 only. So can I say out of that 6 minus 5, 1,000 is going to be going in closing stock. पहले साल में 6,000 यूनिट बनाया, जिसमें से मतलब 6,000 यूनिट बनाया, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था. मतलब 6,000 रुपये का 6,000 यूनिट्स ही मेरे पास अवेलेबल था कि मैं मार्केट में बेच दूँ, बट उसमें से मैंने बेचा कितना? सिर्फ 5,000. तो बैलेंसिंग फिगर 1,000, 6 minus 5,000 is going to go in my closing stock. So 1,000, so whatever my cost of production is there, 6 lakh rupees into 1,000 upon 6,000. So it is going to be my closing stock of finished goods. And this closing stock of finished goods at the same value मैंने बोला था ना नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग में डाल दो. Yes. So what is my next year का cost of goods available for sale? It is 7,80,000 plus 1 lakh which is 8,80,000. Okay. And इस 8,80,000 में से see what is my year 2 का COGAFS in units? ईयर 1 का ओपनिंग स्टॉक दैट वाज 1,000 यूनिट्स जो गया ईयर 2 में विच इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेल, प्लस इन ईयर 2 आई हैव प्रोड्यूस 9,000 यूनिट्स. मतलब कैन आई से 10,000 यूनिट्स इज व्हाट इज अवेलेबल फॉर मी. यस, बट आउट ऑफ विच आई सोल्ड ओनली 8,500 यूनिट्स. मतलब कैन आई से 1,500 यूनिट्स वंस अगेन इज इन माई क्लोजिंग स्टॉक. हाउ डिड दिस कम? 10K minus 1.5K. सो ओनली 1,500 यूनिट्स अवेलेबल. सो इसका कॉस्ट कैसे निकलेगा? इट इज वेरी वेरी सिंपल. इट इज cost of goods available for sale. Over here there is opening stock of finished goods, so cost of production is not cost of goods available for sale. It is 8,80,000 which is my COGAFS. So 8,80,000 multiplied by 1,500 units, 1,500 units बचे हैं, divided by 10,000 units available for sale है. So it is 1,32,000. And finally after making all these adjustments, year 1 में my cost of goods sold comes 5 lakhs, year 2 में it comes 7,48,000. I hope you got it. Okay, next thing, what about my selling expenses? See, सेलिंग एक्सपेंसेस इज व्हाट दे हैव गिवन एज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 96 रुपीज़ है, ठीक है, बट सेलिंग एक्सपेंसेस जो है 5% पर यूनिट, 5 रुपया सेलिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट है मेरा सेलिंग, जिसमें से 80% वेरिएबल है. तो 5 का 80%, 4 rupees is variable and 1 rupee is fixed. So whatever variable cost is there, can I say these are selling expenses. मतलब these are going to be multiplied by the units जो मैंने मार्केट में एक्चुअली बेचा है. कितना यूनिट मार्केट में बेचा ईयर 1 में? 5,000. कितना मार्केट में बेचा ईयर 2 में? 8,500. सो 4 into 5,000 एंड 4 into 8,500 ये यहाँ पर आ जाएगा. ये देखो, आई विल टेल यू what logic is there over here. See, so 4 into 8,500, 4 into 5,000. So 20 and 34,000 is the variable component. 20 and 30. But fixed का तो I told you ना, it does not change with respect to production, it does not change with respect to sale. तो ये तो हर एक केस में 12,000 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा. So 12 into 1, 12 into 1, 12,000, 12,000. Finally my cost of sales comes to 532 and 7,94,000. I hope you got this cost sheet. Okay, I hope you got this particular cost sheet. Now,
लेट अस प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट क्विकली, फटाफट से, और फिर शुरू करते हैं. अब इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया हुआ है, बट नॉट टू वरी अबाउट इट, बिकॉज सब कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एडजस्ट वगैरह करने के बाद, यू आर ऑलरेडी गोइंग टू गेट योर मटीरियल कंज्यूम्ड वाला फॉर्मूला. सो सी, वेट, in year 1 what was the opening stock? See, I'll tell you. They are saying that they need 2.25 average consumption of raw materials. मतलब कहने से it is 2,40,000 divided by 12 into 2.25 simply. So this is going to be 45,000 in year number 1. Okay, and what about year number 2? What was my raw material consumed in year number 2? You are going to say 3,60,000. So wait a minute. First, so 3,60,000 into 2.25 upon 12, if you do, it is 67,500. Simply on the basis of raw material consumed, it is 67,500. There is no WIP requirement. And what about finished goods? Bhaiya, finished goods is going to come, finished goods is going to come on cost of production. मेरे को माफ करता ना, थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं. फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जाएगा. ठीक है, यस, नहीं, गलत. फिनिश गुड्स जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पर, और ये तुमने ऑलरेडी निकाल दिया हुआ है कॉस्ट शीट में. 1,00,000 and 1,32,000 वही डाल दो सीधा नीचे. 1,00,000 and 132. व्हाट अबाउट सन्ड्री डेटर्स? ये तो भैया आपका निकलने वाला है कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पे. प्लस ये लोग बोलते हैं ना 1 मंथ एवरेज सेल्स के बेसिस पे तुम्हारा डेटर्स है, भले वो सेल्स बोले, बट इट इज़ 5,32,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, 44,333 आता है. नहीं ना, मतलब देर इज समथिंग रॉन्ग. ओके, सॉरी, दे हैव टोल्ड यू ना दैट दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. ओके, सॉरी, भले वो सेल्स बोले, क्या बोल रहा हूँ मैं. या दे हैव टोल्ड यू दैट इट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. सो यहाँ पर डोंट गिव प्रायोरिटी टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन प्रायोरिटी टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेल्स के हिसाब से लिखा हुआ है. प्लस इन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 96. तो पहले साल में बिका 96 इंटू आई हैव सोल्ड 5,000 यूनिट्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इफ आई डू 40,000 रुपीज. And in the second year, what I have sold 8,500 units into 96 rupees per unit. इसका 1 month. So it is 68,000. Yeah, 68,000. Cash balance is whatever I have. They have taken as 10,000. मतलब first year में भी 10,000 का cash balance, second year में भी 10,000 का cash balance. So 195 is my current assets, 277,500 is my current assets. And now, what about my current liabilities? They told that current creditor for material is 1 month average purchases and not opening and closing stock. So see, how will my credit purchases come? You know that material consumed is going to be what? You know that material consumed in first year is 2,40,000, right? Plus now add back the closing stock which you have adjusted. You know cost of material consumed, like I did it in the previous question मैंने करवाया था. Cost of material consumed कैसे निकलेगा? Opening stock plus purchased minus closing stock. Opening stock तो अपने first year के केस में 0 रहने वाला है. What about purchased? वही अपने को निकालना है. व्हाट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक? ये तुमको यहाँ से मिल जाएगा. ओए, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया भाई? अरे ऐसा नहीं चलेगा, तुम ऐसे अटकते हो यार. हाँ, सो क्या करवाया था मैंने तुमको? यस, व्हाट वाज माय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? दैट वाज 45,000. सो सिंपली एट 2,40,000 प्लस 45,000, it is 2,85,000. that is what I have purchased in year number 1 and 1 month average purchases. So divided by 12 into 1 if you do, it is 23,750 matched. And what about in year number 2? Now see, in year number 2 what I have consumed, it was 3,60,000. Now reduce the amount of opening stock and add back the amount of closing stock to get to purchases. See, in purchases if you add opening stock and reduce closing stock, तुम पहुंच जाते हो cost of material consumed पे. cost of material consumed में add back करो closing stock, less back करो opening stock, cost of purchases पे पहुंच जाओगे. So what was my closing stock of opening stock of material in year number 1? Sorry, in year number 2. So you would say opening stock मेरे को year number 2 में दिया हुआ है, जो closing stock था year number 1 का, that was 45,000. So less 45,000 plus what was closing stock in year number 2, I will add that back, 67,500. So year 2 का purchases आ गया 3,82,500 divided by 12 into 1 is 31,875. सही है? Yes, 31,875 plus creditor for expenses 1 month of average of all expenses during the year. So let's check in cost sheet क्या क्या expenses है अपने. So see, in year 1 we have direct labor and direct expenses 1,20,000 plus 72,000, that was my fixed manufacturing expenses. Depreciation is not actually an expense. Plus fixed admin expenses 48,000 plus fixed and variable selling expenses, that is 12,000 plus 20,000.
Alright, that is 2,72,000 if I am not wrong. So just a minute. You know, in this question, they have asked you to prepare profit and loss account as well, but I am not preparing it due to time constraint. So it is divided by 12. 22,667 आता है. Is it 22,667? Yes, it is 22,667. Yeah. And what about in year number 2? Let us check out whatever expenses are there in year number 2. Firstly, it is direct labor and expenses 1,80,000 plus fixed manufacturing expenses of 72,000 plus fixed admin expenses of 48,000 and plus fixed selling expenses of 12 and variable selling expenses of 34 divided by 12 into 1. So it is 28,833 somewhat. Yeah, 28,833. Alright, so these are my creditors for material, creditors for expenses, and finally my current liabilities will tally and my net working capital will come to 148,583 in year 1, 216,792 in year number 2. So do you want to match it up? Yes, yes sir, let us match it up. मैच कर लेते हैं इसको. तो मेरा जो ईयर नंबर 1 का आता है, यहाँ पर नहीं, कौन सा था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर अपना, यही वाला था ना. हाँ, तो ये देखो ऑन. Okay, so this is I guess on the basis of, yeah, so 148,583 this is matching, 2,16,792 they matching. Now they have also prepared this on cash cost basis and उस केस में ना ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ठीक है, जस्ट कुछ नहीं होगा, जस्ट डोंट इंक्लूड डेप्रिसिएशन वाइल यू आर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट एंड रेस्ट एवरीथिंग विल स्टे द सेम. ओके, इन द केस जब उन्होंने कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाया है, don't include depreciation and cost sheet and everything else will remain the same and you will get the answer. Alright, so this ends the part 1 of our lecture and I hope you have watched this part. And yeah, आज का homework नहीं I would say, but let me tell you that in this unit you are supposed to solve only one question from home. Just go and solve this PYQ of September 2024, 5 marks. कुछ बड़ा question नहीं है. They have simply asked it on operating cycle method, which you are going to easily solve it. Alright, so now in the next part, I'm going to start with management of receivables and payables and management of cash, and then we are going to end this unit as well. Okay, so see you in the evening where another video is going to come, and I hope this was worth it all. So see you guys, take care, bye bye, and keep studying. And yeah, one more thing. If you are seeing these notes ना, ये जो notes तुम देख रहे हो, I have named these notes as FM का revision Rajdhani. Okay, there's a train Rajdhani Express which runs very fast. So in the same speed, you are going to revise all the concepts of CA Inter, financial management. And I guarantee you that you are going to revise entire FM in just 50 pages. This booklet is shared in Telegram and all the handwritten notes over here, the same handwritten notes which I am using currently right here. These handwritten notes, the same handwritten notes you are going to get in Telegram group as well. Okay, so don't forget to join Telegram group. Bye bye, take care and keep studying. See you in the next part quickly.